Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on the seminar of Quality Management Standard Board. Respected guests, members present in person and members who are joining us from Zoom, I welcome you all on this very important seminar of Quality Management Standard. I am Adnan Hamid Khokar, Embassy for today's seminar. May I request you all to please turn your gadgets on silent mode and observe complete silence while the recitation of Quran and national anthem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم. Thank you very much. Respected member, the International Auditing and Assurance Board has issued new quality management standards. They include the ISQM1 that will relate to the firm performing audit or reviews, other assurance and related services. ISQM1-2 engagement quality reviews and revised IS220. The quality management standard is the culmination of ISV response to the changing environment, the challenges. We have all witnessed that the world is now, the last 2 decades, they are facing the challenges and the business processes has been changed. The quality management standard mark an evolution from a traditional, more linear approach to a new proactive, integrated, and risk-based approach for more robust system of quality assurances. These 3 integrated standards will replace the external existing international standard on quality control ISQ1 and ISA 220. Firms are required to have system of quality management designed and implemented in accordance with the new standard by December 15 to 2022. The Auditing Standard Ethics Committee of the ICAP has initiated the due process. They have issued the exposure draft in 2022. And in continuation of issuing the exposure draft, the committee in collaboration with the Northern Region Committee is arranging this seminar. Our eminent speaker will discuss the significant changes made in the new and revised quality management standard. And our panelists will discuss the challenges that can be predicted in the implementation of quality management standard in Pakistan. With that, I would like to invite for the welcome address, Mr. Ahsan Khalid. Mr. Ahsan Khalid is the council member and chairman auditing Standard Ethics Committee of ICAP, is a partner at EY Karachi. Please welcome Mr. Ahsan Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, first of all of you for joining us today for this session on quality management standard. This is the second in the series of seminars that we are conducting as our awareness campaign on the new quality management standards issued by the ISB. And the standards, as you may be aware, actually will become applicable from periods beginning on or after 15th of December 2022. So the purpose of this awareness campaign and the consultative sessions that we are organizing
in all the cities is that from the institute forum, before we recommend the standard for adoption, we need to understand the ground realities, the challenges faced by the practicing firms in implementing or upgrading their systems of quality control before we decide that what is the appropriate time to implement the standard. Certainly the desire of the institute has always been to implement standards based on the ISB prescribed effective date. But certainly, I think we are very open to also consider the practicalities of the situations depending on the circumstances that the firms face and whether or not there is a genuine reason as to the time that may be required to implement the standards. I think this session will really provide you a very detailed analysis on what the requirements of the standards are. And that will actually help you commenting on the standard, because the standard is shared with the members for their comments already by the institute. And these sessions actually will provide a forum and opportunity to the firms to provide their comments and the issues that they feel would be faced in implementing the standards. Now, the concept of audit quality, I think if you think about it, we all are audit practitioners. What is an audit quality? The concept of audit quality, is it really emerged from the quality of the audit documentation that we are talking about? Or we are talking about the rigor of the challenge that we provide to the management in evaluating the various assumptions and estimates and the judgments taken by the management? Is it really the detail that we provide in terms of the financial reporting policies that management has selected in evaluating those policies, etc.? Or it is the combination of all of that that results in a good quality audit? And if we have all of that in a good quality audit, what drives the audit quality? What makes it possible that the audit is performed in accordance with the required standards? Is it really the people who conduct the audit, the engagement partner, or the team? Is it based on individual efforts? If so, then there actually may be a problem in terms of consistency in this quality across the files of a firm, because a firm may have different engagement partners, and obviously each person had a varying degree of competence. So the question is, there has to be a system approach to achieving the audit quality, which means audit quality is only possible in a sustainable way, in a consistent way, when you have people, systems, processes, technology, all working together to achieve audit quality across all the audit engagements that you undertake as a firm. So it's not and should not be only driven by the individual partner or individual team members, but the firm should have an environment in which you have adequate systems to control the quality risks, procedures, policies that make sure that the work that you undertake while performing an audit is of the standard that is required by the ISAs. So it's an approach that you build policies and procedures in your firm, right from starting from how you accept clients, how you actually recruit people, how you assign people to those engagements. What are your policies for training people, for updating their knowledge on a regular basis, for making sure that they have an environment in which they can voice their concerns openly. You encourage people to agree or disagree and not only dictate your views on the team. There is a consultative process within the firm when there are complex situations. So all of these policies and procedures
actually, and with the use of technology, makes possible that the audit is delivered with the required quality in a consistent manner. So the international approach to audit quality was reviewed, I think, a few years back, because we operate under the ISQC standard, which is the current standard implemented. But I think the ISB took approach that the current standard is not linked to the quality issues which are surfaced normally on the when you inspect the quality of different firms across various jurisdictions. So there has to be a linkage between the system of quality control and the output, which is the audit quality in terms of the engagement reviews, which means that a root cause analysis has to be performed whenever you have an audit quality issue, whether this audit quality issue is emerging from lack of training, is emerging from lack of supervision. So there has to be a root cause analysis before you determine that what system changes are required in the firm so that that kind of a quality issue is not repeated. So the whole architecture and concept behind this standard is basically to understand the quality risks and then design quality control procedures so that those risks are mitigated. Now, in Pakistan, I think we have obviously firms of different sizes and with different risk levels. And therefore, this standard provides flexibility to each of the firm. It's not necessary that all the firms require the same amount of quality control procedures and systems and investment in technology. It depends on the size and complexity of the firm. So this standard is not very rigid and is quite flexible. And it provides an opportunity to all of us to revisit the quality control processes and systems within our firm and to consider whether those procedures and policies are aligned to the real quality risks or not. So I'll not take much of your time in terms of explaining what the standard is, because we have a whole presentation on it with a discussion. But I think I just wanted to brief you that this, from the institute point of view, we are actively considering this standard for implementation in Pakistan. And therefore, your feedback and input is of great importance for us to take this decision. And your concerns, I think, will be considered by the council, by the auditing standard committee, before we really go forward and recommend the standard for adoption. Thank you so much. Thank you very much, Mr. San, for guiding us that how to mitigate and implement the quality. And this is why we are here today. Our first presentation is on the ISQM1, that is the quality management of firms that perform audit, reviews of financial statement and assurance and related service engagement. That will be presented by Mr. Amin Ali. Mr. Amin Ali is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ACCA, ICA, ASS. Over his 20 years in association with the firm, he has been involved and is passionate about learning and delivering about the challenges, the changes in IFRS. Mr. Amin Ali is contributing towards a lot in the current issues towards public finance and current audit practices. May I request you to please welcome Mr. Amin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And a very warm good afternoon comes sort of good evening to everyone. अभी अरसलान साहब ने बहुत अच्छे से एक overview दिया. As this is the awareness session on ISQM1, let's just go through the slides and see what provision it contains
and what challenges might have while it's being implemented. Okay. जिस वक्त हमारे पास ISQC1 आया बैक इन 2009 और वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कुछ सर्टेन इश्यूज अराइज होना शुरू हुए. उन इश्यूज को लेके जब हम चलना शुरू हुए और मतलब IASSP ने देखा, those were the key matters which basically led towards the introduction of ISQM1. It took a good from 2013 till 2020 when ultimately it was introduced. There were these critical key 7 matters which basically were noticed across, और उनकी बेस के ऊपर ISQM1 को लेके चलना पड़ा, या जो आज ISQM1 हमारे सामने है उसकी बेसिस इन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं कि गवर्नेंस एंड लीडरशिप हमारे पास क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट गवर्नेंस एंड लीडरशिप क्या होगी, फर्म का मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस मॉनिटरिंग प्रोसेस के अंदर remedial actions कैसे होने चाहिए. And there was a big shift. It's not a quality control of one engagement. This is a system of quality management, which basically leads towards the entire firm and the entire operations and how this should be reflected. Engagement partner की responsibility towards the conducting of an audit, the review, the direction that the team shall contain, and how shall it be monitored. It was noticed and then it led to how it, मतलब हम देखेंगे कि ISQM1 में कैसे आया. Reliance on the network firms. It was another major area that if there is a firm and it's a part of a network, ये किन network resources को कैसे use करेगी, and while using those network resources, how much reliance can it place? Because if we are the part of a network firm and if we are using the network resources, then can we exclude our responsibility? Or how can we limit our responsibility that we are using the network resources? और इसको हम किस हद तक आगे implement करना चाहिए हमें? Communication flow, altogether a new area. What communication should be made, how the information should be collected, how the information should be processed, and once this piece of information is processed, how this information shall be communicated to different members of the firm, to the engagement team members, and if there is a need, how this information should be communicated to regulators and external stakeholders. एक बहुत बड़ा सवाल इसके ऊपर ये उठा कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, देयर आर एनॉर्मस रिक्वायरमेंट्स. If we speak of those requirements and then there are certain firms having variable sizes, how those requirements should be mapped towards firms of different sizes. There are SMPs, there are big firms. There should be an element of scalability. कि इस requirement को किसी भी ISQM की requirement को कोई भी firm basing upon its size and the size of the engagement, how would it scale? And then there was engagement quality control review. Amongst various factors, I perceive these were a few of the major factors which basically led towards the introduction of ISQM1. अगर हम ISQM1 के ऑब्जेक्टिव को देखें तो ISQM1 हमें ये कहता है कि एक फर्म अपना सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को ऐसे डिजाइन, इंप्लीमेंट और ऑपरेट करे कि उसे रीजनेबल अश्योरेंस आ जाए. बट व्हाट रीजनेबल अश्योरेंस? इफ यू लुक एट द ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बेसिकली दैट हैज चेंज्ड compared with ISQC1. Previously, the focus on ISQC1 was that the firm and personnel, they're compliant with the requirements. But now it has further elaborated that the firm and its personnel, they not only understand their responsibilities, जो कि उनकी regulatory framework या applicable standards की वजह से उनके लिए आ रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो जो engagements conduct कर रहे हैं, उन engagements की requirements को भी उन standard के मुताबिक देखें. So basically this block where the firm and the personnel उनकी responsibility की बात की, this was one area where ISQM1 has expanded, which was basically not available in ISQC1. That led to the entire framework which we'll be studying, which we'll be going through over the next slides. और हमारा जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम जो भी रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं वो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर अप्रोप्रिएट है. दिस इज द सेम ऑब्जेक्टिव एज इट वाज इन ISQC1.
So basically, the focus comes on this part where the firm and its personnel, they fulfill their responsibilities in accordance with professional standards, applicable legal and regulatory requirements, and they conduct their engagement in accordance with such standards. अगर हम जो ISQM1 के अगले एलिमेंट्स हैं उनको गो थ्रू करने से पहले एक मर्तबा देख लें कि इस ओवरऑल अप्रोच में फर्क क्या पड़ा है जो ISQM1 हमें लेके जाएगी. तो इन अ जेस्ट, इट रिक्वायर्स द फर्म्स टू डेवलप अ रिस्क बेस्ड अप्रोच. अब उस रिस्क में है क्या? प्रोएक्टिव होते हुए फर्म्स ने ये देखना है कि हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम किन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे, उन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में व्हाट मे बी द रिस्क्स, एंड वंस दोज रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड, हाउ आर वी गोइंग टू टेक रिमीडियल एक्शंस टू cater those risks. Scalability for SMPs or for certain engagements where the requirements are not very stringent, how are you going to scale up your ISQM1 requirements? Firm की responsibility while complying network resources क्या होने जा रही है? This is a big concern जो कि पहले ISQC1 में नहीं था, और इसको हम आगे देखेंगे कि whatever the resources which the networks provide, we need to see how those resources can be used. We need to draft policies upon that, and then at the end, again, while using those resources, the quality or uski responsibility, it purely lies with the firm. We can't exclude our responsibility by passing it on towards the network, because these were the network resources and these were the network policies and procedures, and we have applied that. Therefore, our responsibility has been excluded. This standard lays a very important requirement that at least annually, at a given point, the chief executive or whosoever is at the top who is responsible for this, he evaluates that whether the firm's system of quality management is operating in a robust manner or not. और जो objectives achieve करने के लिए हमने तमाम system बनाया है, क्या वो objectives से meet हो रहे हैं कि नहीं. और फिर standard यहीं तक ही नहीं रुकता. Standard एक step और आगे जाके कहता है कि all those people who are basically responsible for that quality management, even they should be evaluated whether they are discharging their responsibilities in due manner or not. ये एक overall approach है जिसके तहत ISQM1 चल रहा है. और if we just for a quick comparison, when we look at ISQC1, जो इस वक्त तक अभी prevalent है, I've tried to copy the language, the verbatim text of both the ISQC1 and ISQM1, ताकि हम एक overall approach को differentiate कर सकें कि जो new standard है वो हमें किस direction की तरफ लेके जा रहा है. It basically says कि आप policies and procedures बनाएं ताकि इन elements को address किया जा सके. The keyword over here is elements. The ISQC1 approach took these 6 elements to overall draft a framework जिसके अंदर leadership responsibilities, ethical requirements, acceptance and continuance of a client, human resources, engagement performance और monitoring था. But with the emergence of this ISQM1, वो कहते हैं कि एक ऐसा system हो जो continuity में चले और एक iterative approach के तहत चले. ये कहीं पर भी रुका हुआ ना हो, ये dynamic हो, सारे चेंजेस को ये रिस्पॉन्ड करे और ये एक लीनियर फैशन में ना चले कि ये पॉलिसीज है हम इसको टिक मार्क करके चलें. और उसके बाद इट यूजेस द टर्म 8 कंपोनेंट्स. विद दिस अप्रोच ऑफ 8 कंपोनेंट्स, द सिस्टम बिकम्स इंटीग्रेटेड. फ्रॉम एलिमेंट्स टू कंपोनेंट्स, वी कम टुवर्ड्स फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, relevant ethical requirements, acceptance or continuance of a client, engagement process, resources, information and communication, and then slide इसके ऊपर नहीं आ रहा, the remedial process, monitoring and remedial process. And if we compare both ISQC1 to if we compare both ISQC1 to ISQM1, there are 3 elements: the engagement performance, acceptance of a client, and relevant ethical requirements, which more or less are the same. But then there are 5 other elements, of which 3 are altogether new and 2 have been enhanced. The new elements are the monitoring and remediation,
the information and communication, and at the top it's the firm's risk assessment process. तो अब जो नया ISQM1 का सिस्टम हमारे सामने है वो इस इंटीग्रेटिव अप्रोच को लेकर चल रहा है और इसीलिए वो अपनी फ्रेज यूज कर रहा है कंपोनेंट. Now this is a picture that what ISQM1 uses, and if I look at this picture, this relates a great story. किसी भी फर्म के सिस्टम में at the core of its system it's going to be the governance and leadership, जो कि इस पूरे सिस्टम को लेके चल रही है, जो कि टोन को at the top सेट कर रही है. Once the leadership sets the tone, at the top it sets up the firm's risk assessment process, कि हमारे लिए perceived risk क्या होगा, हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे और हम कैसे इस चीज पे सर्टन करेंगे कि वो तमाम रिस्क जो क्वालिटी में आ सकते हैं उनको लेके कैसे चलना है. There are three major activities: acceptance and continuance of a client, the engagement performance, and then the relevant ethical requirements. Whilst taking up these three activities, we make use of the resources available and communicate every information which we need to communicate within the firm or the engagement team. और जब ये सातों component पूरे हो जाएंगे, towards the bottom we'll have monitoring and remedial process. Now this is an overall framework which the ISQM1 goes through. अगर आप में से भी कोई बंदा कुछ ऐड करना चाहे तो we can go with the interactive one or I'll continue. So this is what the ISQM1 states the approach should be. इस अप्रोच के अंदर उसने दो बड़ी डिफरेंट चीजें कही हैं. ISQM1 आपको ये कहता है कि आप फर्म में जो भी एक टॉप पोजीशन है, whether you call it a chief executive officer or the managing partner or the board of partners or any other equivalent name, that person would be ultimately responsible for all the quality and he should be accountable if there's any lack of quality. So this is a concept that it has introduced. और इस इंट्रोडक्शन के साथ वो दो और नई चीजें बताता है. वो कहते हैं कि इस अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने में हमें हेल्प आउट कौन करेगा? एक वो पर्सन जो ऑपरेशनली सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ओवरऑल, और उसके साथ एक कोई और पर्सन जो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. दैट कैन बी कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस एंड दैट कैन बी मॉनिटरिंग एंड रिमीडिएशन. यहां पर स्टैंडर्ड बहुत क्लैरिटी से कहता है कि ये जो दोनों पोजीशंस हैं, जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है और जो दूसरी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस and remediation and monitoring hai, they should be directly communicating their concerns with ultimate responsibility and accountable person. और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन साथ साथ चल रही हो कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस सिस्टम की ये रिमीडिएशन है, रिमीडिएशन के बावजूद ये रिस्क कवर नहीं हो रहे, क्या हमें एडिशनल कोई प्रोसेस अडॉप्ट करना है या क्या हमें कोई एडिशनल मेजर लेना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स दुरुस्त हैं या हमें ऑब्जेक्टिव्स को भी एडिशनल लेके आके फिर नए सिरे से इसको लेके चलना है. फिर स्टैंडर्ड यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि इसमें दो नई चीजें और बताता है. This is altogether a new area which was not covered in ISQC1. This is what ISQM1 has introduced. वो कहते हैं कि जो भी बंदे इस क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेज भी हो, उनका इन्फ्लुएंस इन द फर्म भी हो, उनकी अथॉरिटी भी हो, एंड उनके पास सफिशिएंट टाइम भी हो कि वो इस सारे प्रोसेस को फुली डिस्चार्ज कर सकें. और उसके बाद वो कहते हैं कि वो अपने रोल्स को समझें और इन रोल्स को समझने के बाद वो इस काम के लिए अकाउंटेबल भी हों. सो दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू फ्रेमवर्क इन विच एटलीस्ट हमने 3 पोजीशंस ये देखी, 2 पोजीशंस अभी इसमें और आएंगी जो कि हम अगली किसी स्लाइड में देखेंगे कि जब ये लोग काम कर रहे होंगे तो इनके काम को कौन इवेलुएट करेगा. सो एटलीस्ट देयर शुड बी 4 पोजीशंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. One who is ultimately responsible, one who is operationally responsible, one who is responsible for compliance and remediation process, और जो इसका आखिरी एलिमेंट है इवैल्यूएशन का, उसमें एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पार्टनर या कोई ऐसी कमेटी हो जो कि इन तीनों के फंक्शंस को देखे कि क्या ये अपने फंक्शंस, डेजिग्नेटेड फंक्शंस टोटली परफॉर्म कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं. तो सो फार इसमें अगर कोई आप लोग इनपुट देना चाहें तो.
जी, माइक आगे दीजिएगा। तो ये लगता नहीं है, तो मिनिमम भी आप कह रहे हैं 3 से 4 लोग होंगे जो ये सारा परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि एक खास लेवल तक आपकी फर्म का साइज होना चाहिए, तब जाकर आप इस स्टैंडर्ड को कर सकते हैं। अदरवाइज नेटवर्किंग ही वाहिद ऑप्शन रह जाती है। ये पूरा नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क के अंदर एक पूरा सिस्टम हो जो उस पूरी नेटवर्क की जितनी फर्म्स हैं उन सबको देख रहा हो एक सिस्टम, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं बनता। स्केल होना चाहिए। इस पे जो आधा बात जो आपने कही कि नेटवर्क होना चाहिए, वहां तक तो आपकी बात ठीक है। आधी ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड देता है। वो कहता है जैसे जैसे आपकी फर्म बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी वैसे वैसे सिस्टम इवॉल्व भी करेगा। वो फर्म्स जो साइज वाइज छोटी हैं या जिनके क्लाइंट्स की नेचर ऐसी नहीं है, वहां पर आप इन रिक्वायरमेंट्स को स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो एसएमपी की इंक्लूसिवनेस के लिए एक गिवन लेवल तक तो स्टैंडर्ड हमें लेके चलता है, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो जो बात आप कह रहे हैं अल्टीमेटली शायद रास्ता वहीं पर ही जाएगा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट्स आगे आएंगी और जितनी पोजीशंस आगे क्रिएट होंगी वो उसी तरफ ही जाएंगी। अगर हम 1 मिनट के लिए इससे हट के बात करें तो जो कोड ऑफ एथिक्स है उसकी कूलिंग ऑफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट हो गई हैं। तो इफ यू आर द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ फॉर एग्जांपल एनी लिस्टेड क्लाइंट और अ पीआईसी, एंड आफ्टर 5 years once you have served, तो अब आप उसका क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे कितने साल और काम कर लेंगे? 2 साल। उस 7 साल के बाद फिर आपको यू नीड अ कूलिंग ऑफ पीरियड। तो इसका मतलब है कि विद वन सेट ऑफ पार्टनर्स, जिसमें एक एंगेजमेंट पार्टनर है, एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, एक वो पार्टनर है जो अदर सर्विसेज देता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें सबका कूलिंग ऑफ चल रहा होगा। तो विद वन सेट ऑफ पार्टनर्स इट मे नॉट बी अ वायबल ऑप्शन टू कंटिन्यू। तो अल्टीमेटली हल वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। एनी अदर कॉमेंट? Okay, so I should complete it first. Perfect. I've tried to put many points so that once these slides are shared, तो हम उसको correlate कर सकें. This is what the firm's risk assessment process should be. आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करें, कौन से जो ISQM1 में दिए हैं, बट इफ योर फर्म हैज गॉट अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स वेयर यू नीड टू एस्टैब्लिश एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स, आप उनको एस्टैब्लिश करें। आप अपने रिस्क्स देखें क्या हैं, और उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए आप अपने रिस्पॉन्सेस को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करें। अब इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपका क्या रिस्क है? आप नेटवर्क की पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं। मैं एक बड़े सिंपल रिस्क की बात करता हूं। द ऑडिट रिपोर्ट दैट वी आर इशूइंग दैट मे बी इनअप्रोप्रिएट, गॉड फॉरबिड। इफ दिस इज वन रिस्क, इसका कितना बड़ा इम्पेटस हो सकता है? There can be a regulatory call off, there can be like another investigation, and there what not. So if such a risk arises, आपका पहले स्टेप पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो एंगेजमेंट आपने किया उसकी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। अगर वो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं है, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसको एड्रेस कैसे करना है? देयर आर मे बी सर्टेन चेकलिस्ट्स, देयर मे बी सर्टेन पोजीशंस, देयर मे बी कोल्ड फाइल रिव्यू, देयर मे बी अनदर रिव्यू बिफोर यू इशू द रिपोर्ट, और मे बी द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट, ही इज असाइंड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि इन रिपोर्ट्स को देखने से पहले आपका इन एरियाज पे गो अहेड चाहिए। दीज आर ऑल द वेरियस procedures or steps that a firm may take. I got a presentation, the ICAP used it previously, शायद कराची से हुआ है। I took this slide from over there, it was a wonderful slide. कि जब भी आपके सामने क्वालिटी रिस्क आए, आप सबसे पहले देखें कि उस रिस्क की पॉसिबिलिटी भी है अगर होने की कि नहीं। मिसाल के तौर पे जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि आपने एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, आप गोइंग कंसर्न ठीक से नहीं लगा सके, या गोइंग कंसर्न को रिप्लाई करते हुए आपने जिस तरह रिपोर्ट मॉडिफाई करनी थी आप उस तरीके से अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई नहीं कर सके, तो क्या ऐसा रिस्क है या नहीं है? अगर ऐसा रिस्क है तो फिर देखें कि उस रिस्क का इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है।
अगर उसका आपको अफेक्ट भी आइडेंटिफाई हो जाए तो आप उस रिस्क को असेस करें कि उसका असेस द क्वालिटी रिस्क टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेटेड रिस्पॉन्स. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, कि उस रिस्क को हमने लेके चलना है, उस रिस्क के परवेसिवनेस को लेके चलना है, अफेक्ट को लेके चलना है, और फिर वो रिस्क हमें कहाँ अफेक्ट करेगा उसके लिए हमने क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रोएक्टिव होते हुए अभी अडॉप्ट कर लेने हैं, ताकि वो रिस्क जब भी कभी आए वो फौरन ही केटर हो जाए. Governance and leadership. This is altogether changed a lot. This basically requires that a firm who is willing to implement ISQM1 that sets a leadership tone at the top. और वो टोन, जो लीडरशिप टोन हमने एट द टॉप सेट की है, वो आपको बताया कि पूरे फर्म में एक ऐसा कल्चर है जो एथिकल वैल्यूज का है, जिसमें आप बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन क्या कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और सबकी अकाउंटेबिलिटी इस पे क्या होगी. इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी, जो मेरा ख्याल है कि इसमें और आगे एक्सेप्टेंस ऑफ अ क्लाइंट के अंदर ओवरलैप करती है, वो फर्म के फाइनेंशियल डिसीजंस हैं. While accepting a client, shall we accept that client? Is it going to expose us to some other risk? Or how the ethical risks may affect us while we accept a particular engagement? Shall we reject that engagement outright once this is being offered to us? या अगर हम इस engagement को अभी accept कर लेते और हमें बाद में किसी ऐसे फैक्टर का पता चलता जो हमें पहले पता होता और हम engagement accept ना करते, अब पता चला तो अब हमने क्या करना है. These are all the policies that the firm needs to lay down. This is that culture which needs to emanate from the top. Ethical requirements, more or less the same. The firm, its personnel, including network firms and service providers. Service provider is a key word over here. हम जब भी कभी ऑडिट में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हैं, मे बी क्लाइंट ने एक एक्सपर्ट यूज किया और एक एक्सपर्ट हमने यूज किया टू इवेल्युएट आवर रिस्क, और मे बी हमने अपने किसी कंपोनेंट ऑडिटर के साथ काम करवाया, तो देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स. Whether this is the network resources, whether these are the service providers, whether these are our own resources, all of us do fully understand what our ethical responsibilities are. और हम जिस भी जॉब को पूरा करने जा रहे हैं उसमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं. देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, यू आर द ऑडिटर ऑफ अ PIC. आवर फर्स्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, दैट वी अंडरस्टैंड एवरी 5th year वी नीड टू रिमूव, वी नीड टू रोटेट. जब हम रोटेट होते हैं तो हम अपनी चाइनीज वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, टीम्स आगे कैसे लेके चलती हैं, क्वालिटी कंट्रोल उस असाइनमेंट की हमने किस तरह से लेके चलनी है. दीज आर ऑल एथिकल रिस्क्स. वी हैव मेड अ पॉलिसी कि हम फेमिलियरिटी रिस्क को किस तरह से कवर करेंगे, हम गिफ्ट्स को या बाकी इन चीज़ों के ऊपर क्या पॉलिसी बना रहे हैं. अगर हम किसी क्लाइंट का अश्योरेंस सर्विस कर रहे हैं एंड देयर इज अ नॉन अश्योरेंस सर्विस, व्हाट पैरामीटर्स शैल वी टेक to differentiate between the two assignments so that one does not overwhelm the other. ये वो तमाम पॉलिसीज हैं जो हमने खुद ही देखनी है कि एथिकली आर वी कंप्लायंट विद दीज और नॉट. Acceptance and continuance, mostly the same requirements as we had in ISQC1, जिसमें आपके पास नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एंगेजमेंट हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, फर्म की लायबिलिटी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एलिमेंट है जो इसमें नया इंक्लूड हुआ है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म इन अप्रोप्रिएट जजमेंट टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू अ क्लाइंट रिलेशनशिप. किसी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या प्रायोरिटी की वजह से आप किसी क्लाइंट को गलत तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. अब दिस मे बी अ क्वालिटी रिस्क और दिस मे बी आवर ऑब्जेक्टिव दैट वी सेट इट आउट कि हम कभी भी किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो. अगर हम इस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेजर्स क्या अडॉप्ट करेंगे. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ज्यादातर चीजें इसमें सेम है. इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बिल्कुल एट द टॉप हैं, कि जो भी एंगेजमेंट टीम आपने उस एंगेजमेंट के लिए सेट की है, क्या उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, क्या वो उतनी कॉम्पिटेंट हैं कि उस काम को उसी तरह से डिलीवर कर सकें जैसे कि वो डिलीवर होने चाहिए थे. और अगर किसी भी वजह से आपकी उस टीम के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नए हैं,
उनकी सुपरविजन, उनकी डायरेक्शन कैसे सेट की जा रही है। और इस टीम के अंदर ENT इज बेसिकली एक्सटेंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द डायरेक्शन। आपका जो भी इंगेजमेंट पार्टनर है वो इस तमाम टीम को किस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है, किस तरीके से उसका काम रिव्यू कर रहा है, एंड डज ही हैव अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट टाइम टू फुलफिल दिस जॉब। आपके जितने रिसोर्सेज इसमें लग रहे हैं एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस में, आर दे अप्रोप्रिएट टू व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर, या जो रिस्क्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। ISQM1 recognizes that apart from human resources, there may be technological resources, there may be intellectual resources, and then you may engage a service provider जो कि आपको अपने टेक्नोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज दे। आप जिस भी तरह से किसी भी रिसोर्स को ऐड करते हैं, क्या आपका वो रिसोर्स आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के तमाम कंपोनेंट्स के साथ टाई अप करता है? जो आपके क्वालिटी रिस्क्स एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये तमाम रिसोर्स कॉम्पिटेंटली उन चीजों में फिल इन करते हैं और फिट इन करते हैं? क्या आपको इनके लिए कोई सेपरेट पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि जब ये रिसोर्सेज हम यूज करें तो इनकी वजह से हमारे क्वालिटी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए? उस चीज को कैटर करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज बना लेनी चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी फर्म में जो पार्टनर हैं और जो स्टाफ हैं, जब वो किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए इंगेज किए जाएंगे तो हम उनकी एंगेजमेंट को मॉनिटर कैसे करेंगे, या हम उनको उस रोल के लिए असाइन कैसे करेंगे, एथिकल कंप्लायंस कैसे होगी, अगर कोई रेगुलेटरी कंसिडरेशन है तो हम उसको किस तरीके से मीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एन ऑडिट ऑफ PIC. Are we fulfilling the audit prerequisites to accept that particular audit? Do we have competency? Do we have time? Do we have resources? हमारे अपने ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म हैज गॉट अ टैक्स बिजनेस लाइन, एन अकाउंटिंग बिजनेस लाइन, एन ऑडिटिंग बिजनेस लाइन। क्या इनमें से किसी का ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ क्रॉस तो नहीं कर रहा? क्या सारे हार्मनी के अंदर चल रहे हैं? कंपोनेंट ऑडिटर्स को हमने कैसे यूज करना है, उनके काम पे रिलायंस कैसे प्लेस करनी है, उनको डायरेक्शंस किस तरह देनी है और उनकी सुपरविजन कैसे लेके चलनी है। External service providers, IT applications, and then alerts for the engagement team. This alerts for the engagement team, it again links with communication of information. क्योंकि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज की बात आगे कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन की बात आगे कर रहे हैं, ISQM1 recognizes that information and dissemination of information is an important element. ISQM1 is very clear that whatever piece of information you get, आप उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद आप उसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करता है कि आप 4 तरह से इसको कम्युनिकेट, या 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन बी विद इन द फर्म एंड वन अनदर, इट कैन बी विद द एंगेजमेंट टीम, इट कैन बी विद द नेटवर्क फर्म्स एंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, and it can be with regulators. Suppose kariye there's a firm, that firm has done an audit engagement, and once that audit has been performed and the report has been signed by the engagement partner, they receive a letter from, for example, AOB or SCCP. Who would respond? How would he respond? What is going to be the chain of command? And if, for example, this is, we say, a firm having multiple offices across different cities in Pakistan, how would it respond? And if, for example, it was an audit of a consolidated financial statement in which one of the component was in some other country, और आपने उसके काम को भी अपने काम के अंदर सिमुलेट किया है, अब इस कम्युनिकेशन को हमने कैसे लेके चलना? तो देयर मे बी डिफरेंट चैनल्स, देयर मे बी डिफरेंट लेवल्स। हमने इसकी पॉलिसी बनानी है कि इस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कैसे करें। मेरा ख्याल शायद थोड़ा सा जरा ज्यादा हो गया, बट वी हैव टू गो विद दिस। शायद मैं से ज्यादा कलरफुल नहीं बना सका, 1-2 स्लाइड्स में मैंने कलर डाले हैं। दैट वाज अ कॉपी पेस्ट स्लाइड, सो दे आर कलरफुल। अब दिस इज बेसिकली दैट मोस्ट important part in the entire ISQM1.
जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस कर रही हैं, और ये बेस कर रही हैं डेफिशिएंसी के ऊपर। तो इससे पहले कि हम डेफिशिएंसी करते हैं, एक्चुअली कॉपीड द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम द स्टैंडर्ड, ताकि हम उसका वर्बटम टेक्स्ट समझ लें कि स्टैंडर्ड हमसे क्या रिक्वायर करता है। आपका कोई ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मे बी के दुरुस्त नहीं है, आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके, उस क्वालिटी रिस्क को आप परसीव नहीं कर सके, और अगर वो रिस्क आपके सामने था तो आप उसको रिमीडिएट नहीं कर सके, या ISQM1 के किसी भी क्रिटिकल कंपोनेंट को आप एड्रेस ही नहीं कर सके, चारों में से कुछ भी होगा तो देयर इज अ डेफिशिएंसी। And this basically leads to that critical process which is at the core of ISQM1, कि आप किसी भी प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और रिमीडियल मेजर कैसे लेंगे। इसकी एक एग्जांपल अगेन वही वाली है कि फर्म के या एंगेजमेंट के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, और उन सर्कमस्टांसेस के चेंज होने के बाद हम अपनी एंगेजमेंट को उसी तरीके से ऑल्टर नहीं कर सके, तो दैट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द रिस्क सिस्टम। प्रोसेस वही है, इसमें आपने मॉनिटरिंग करनी है, आपने आइडेंटिफाई करनी डेफिशिएंसीज क्या हैं, उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। पहले तीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराता है, दैट इज द रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस वो आपको कहता है कि जब भी कोई डेफिशिएंसी आपके सामने आए, आप देखें कि ये डेफिशिएंसी हुई क्यों थी। देयर कैन बी वेरियस रीजंस। जो टीम हमने सिलेक्ट की वो टीम किसी भी वजह से जूनियर थी या इनकॉम्पिटेंट थी। अगर वो कॉम्पिटेंट थी या केपेबल थी, क्या उनकी सुपरविजन प्रॉपर नहीं हुई? अगर सुपरविजन प्रॉपर हुई तो जो नॉलेज बेस उनको चाहिए था, क्या वो नॉलेज बेस अप्रोप्रिएट नहीं था? दैट कैन बी वन पॉइंट। हमने इस ऑडिट के करने में कुछ कंपोनेंट ऑडिटर्स को एंगेज किया, क्या कंपोनेंट ऑडिटर्स सही तरीके से उस ऑडिट को नहीं लेके चल सके? कंसोलिडेशन प्रोसेस जहां पर हो रहा था वहां पर क्या एरर्स हमारे सामने आए, हम उनको क्यों नहीं लेके चल सके? जब हम सारी चीजों को देखेंगे तो कोई ना कोई एक रूट कॉज होगा जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट वो रिजल्ट नहीं दे सका होगा जो हमें चाहिए था। इस रूट कॉज एनालिसिस को ISQM1 इंट्रोड्यूस कराता है कि जब भी कहीं आपका कोई डेफिशिएंसी आए, आप अपने सिस्टम में उस रूट कॉज को एनालाइज करें। और यहां पर वो एक नई बात करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगेजमेंट आपके सामने आ जाए, जिस एंगेजमेंट के अंदर किसी भी वजह से आपने इन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट दी थी, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप लीगल काउंसिल से एडवाइस लेंगे? आप देखेंगे कि अब मुझे रेगुलेटरी प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करने हैं? रिपोर्ट इशू हो गई है, अब मैं और क्या मेजर्स ले सकता हूं कि मैं इस रेगुलेटरी रिस्क को कर्ब कर सकूं? स्टैंडर्ड आगे एक स्टेप और आगे चल के कहता है कि आप जब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करें तब ऑन गोइंग कम्युनिकेशन करें बाकी लोगों के साथ, कि हमने मॉनिटरिंग क्या की, वो एक्टिविटीज क्या थी, उन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या आया, जो रिलेटेड टीम्स थी आपने उनको बताया कि आपकी इस मॉनिटरिंग के नतीजे में ये डेफिशिएंसीज निकली हैं, एंड दीज आर द डेफिशिएंसीज दैट यू नीड टू इम्प्रोवाइज। जब हम इस सिस्टम को आगे लेके चलते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच आती है कि टू एंड फ्रो, देयर वाज एन ऑडिट और देयर वाज अ रिव्यू, देयर वाज अ क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन, एरर निकले, हमने उनको इवैल्यूएट किया, टीम को फिर बताया, बाकी टीम्स को बताया कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। उन्होंने भी कम्युनिकेशन के बाद उन एरर्स को टेकअप किया, और गोइंग फॉरवर्ड एक इटरेटिव मैनर के अंदर वो रिस्क दोबारा हमें एमिनेट नहीं हुए। ये एक कलरफुल चीज हमारे सामने आ गई। I basically took it from the application guidance. नहीं नहीं, जब हम इन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास ISQM1 का अपना स्टैंडर्ड है, एक उसकी स्नैपशॉट है, एक उसकी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की गाइडेंस भी है। इट्स अ बिग गाइडेंस जो कि 3 लेवल्स पे हमें लेके चलती है कि अगर एक स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिस हो तो वो इसे कैसे अडॉप्ट करे स्केलेबिलिटी के लिए, नेटवर्क ऑफ फर्म्स हो तो वो इसे कैसे लेके चले, और जो पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उन्हें कैसे लेके चलें। उस एप्लीकेशन गाइडेंस के अंदर वो बताता है कि जब भी कभी आप अपने सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एरर नोट करें, आप देखें कि क्या वो एरर परवेसिव था
और क्या वो एरर सिवियर भी था कि नहीं था, क्योंकि सिवियरिटी एंड परवेसिवनेस ऑफ एन एरर, this basically lets you lead towards what direction you should take. If there was a deficiency which was severe and pervasive, for example, आपकी deficiency क्या थी, quality control के बगैर report issue हो गई. Now this is a very severe error. This is a very severe deficiency. और इसकी pervasiveness भी बहुत है, क्योंकि इसके ऊपर firm का वो related engagement partner, he may be called upon by either maybe ICAP or by AOB or SECP that an inappropriate report has been issued. तो इसका impact भी severe है और ये pervasive भी है. अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए तो क्या उसका कोई remedial measure लिया गया था? This is the next thing that we need to see. और अगर वो remedial action ले लिया गया है तो क्या उसके बाद वो जो deficiency थी क्या वो correct हो गई है कि नहीं हुई? This is what your system of quality management is. कि for example आपको पहले स्टेप पर ही पता चल जाता है कि एक रिपोर्ट आपने इशू की है, या अगर हम रिपोर्ट के अलावा कोई और एग्जांपल ले लें, मे बी आपका एंगेजमेंट पार्टनर था, किसी भी वजह से आपको पता नहीं चला, 5 साल से ज्यादा हो गए वो रोटेट नहीं हुआ. Maybe there can be a case. If that is the case, is this deficiency severe? Yes. We are not in compliance with the code of ethics. इसका effect क्या pervasive होगा? बिल्कुल होगा. Because this is one of those areas which may hardly be forgiven by any regulator. अगर इन दोनों का जवाब yes है, for example मैं बिल्कुल नीचे उसके ऊपर चला गया हूँ, yes, तो क्या हमने कोई remedial action लिया इसका? हमने उस डॉक्यूमेंट को चेंज किया जहां पर पार्टनर के रोटेशन के बारे में नोट किया हुआ था, जो हमने असाइनमेंट एलोकेशन रजिस्टर है जिसमें तमाम पार्टनर्स उनके आगे एंगेजमेंट एंड ईयर्स आ रहे हैं, क्या उसकी रिकॉर्डिंग गलत थी, हमने उसको ठीक किया? अगर हमारा ISQM का कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, हम किसी सोल्यूशन पे चल रहे हैं, क्या सोल्यूशन उसको ठीक से ग्रैब नहीं कर पाया? क्या रीजन थी? अगर हम उसके बाद रिमीडियल एक्शन क्या लिया, क्या अब हमने खुद ही रेगुलेटर को बता दिया है, क्या हमने खुद ही उस पार्टनर को बता दिया है, या क्या हमने क्लाइंट के साथ किसी किस्म की कोई डिस्कशन की है? उस इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी को देखने के बाद कंक्लूजन आएगी कि कंक्लूजन क्या है. विद ऑल द सिवियर एंड परवेसिव डेफिशिएंसीज देयर, आई एम इन द रेड ब्लॉक. The SOQM does not provide the firm with reasonable assurance that the objectives of SQM are being achieved. That means a further action is required. अब ये further action कौन लेगा? That person who was ultimately responsible at the top, that person who was operationally responsible, or that person who was responsible for compliance. ये वो पॉलिसीज हैं जो हमने खुद बनानी है कि सिस्टम हमारे सामने है और उन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को हम किस तरह से लेके चल रहे हैं कि इन परवेसिव या सिवियर डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई कैसे करना है और किसने करना है. फॉर नेटवर्क्स द स्टैंडर्ड इज वेरी क्लियर. You use the network resources, you yourself draw a policy कि मैं किसी भी network resource को किस extent पे इस्तेमाल करूंगा, किसी resource को कितना use करूंगा, and then whatever you use, the responsibility to maintain quality of your firm is entirely your responsibility. You can't pass your onus to the network firm. So the standard becomes very clear on this कि you yourself are responsible. इसमें दो बड़ी important चीजें हैं. एक तो नेटवर्क जो भी रिपोर्ट लेता है आप उससे एनुअली उस रिपोर्ट को लें और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को आप हर जगह पर फिर डिसेमिनेट करें. बहुत सारी फर्म्स की प्रैक्टिस है, उनके एनुअल हेड ऑफिस से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आती है, अब उसका कोई भी इक्वल सिनोनिम हो सकता है, विच एक्चुअली लेट्स द नेटवर्क नो कि हमने इन साल में इन फर्म्स के क्वालिटी कंट्रोल किए हैं या ये हमारी डेफिशिएंसीज नोटेड हैं, हमने ये मेजर्स लिए हैं और फ्यूचर के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So just to obtain that report, see where the deficiencies were, and then communicate it with all the relevant parties so that they know in the forthcoming evaluation हमने इन risks को mitigate करना है. This is annual report and its communication. This is another requirement जो कि इस standard के अंदर आई है. यहाँ पर चीज थोड़ी सी एक स्टेप और मुश्किल हो जाती है. Evaluating the system of quality management. Standard is pretty clear. Okay, ना इतनी देरी लगेगी बस. Standard is pretty clear कि जब भी कभी इस तरह की कोई deficiency आएगी, the person who is ultimately responsible for quality, basically he needs to take an action.
वो एनुअली इस सिस्टम को इवेलुएट करे, वो फर्म के बिहाफ पे देखे कि क्या हमारा सारे का सारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि हम ठीक से काम कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे। और अगर वो इस चीज पे कन्विंस नहीं हुआ कि हमारा काम ठीक है, तो उस सूरत में वो देखे कि मैंने रिमीडियल एक्शन क्या लेना है। और यहां पर जो उससे भी नीचे चौथा पॉइंट है, जैसे मैंने सबसे पहले कोरिलेट करने की कोशिश की, कि फर्म में अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इज द सीईओ और द मैनेजिंग पार्टनर, और उसको असिस्ट दो लोग कर रहे हैं, वन हु इज ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल एंड वन हु इज ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस एंड रिमीडिएशन प्रोसेस। क्या ये तीन अथॉरिटीज ठीक काम कर रही हैं? इनके काम को भी आप एनुअली इवेलुएट करें, और इनके काम को एनुअली कौन इवेलुएट करेगा? वेदर अनदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एनी अदर कमिटी, जो कि देखे कि जिन तीन लोगों को हमने क्वालिटी मैनेजमेंट का काम दिया था, क्या वो भी ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं कर रही। सो यहां पर आता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 4 पोजीशंस जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट को आगे लेके चले। इन तमाम चीजों का हमारे पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर में हम कैटेगोरिकली इस चीज को लिखें कि कौन सी पोजीशंस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी इनपुट क्या होगी, हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हम स्टेप्स क्या लेंगे। दिस एंटायर डॉक्यूमेंटेशन, remediation, it's everything that we have covered earlier. That was the end of my presentation. Thank you very much, Mr. Amin Ali, for such a detailed and elaborated presentation on ISQM1 that enable us to understand that how we can opt the policy and procedures and risk-based approach can be adopted to achieve the objectives. Moving forward to the next session, that is on ISQM2, engagement quality reviews. That will be presented by our council member, Mr. Maqbool Hussain, who is also a seasoned practitioner. He is on various independent boards as a board of director. So please put your hands together and welcome Mr. Maqbool Hussain. ऑन हो गया जी, on. ये Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for providing me this opportunity to be here and sharing my views and learning from your questions and your input as well. So the life is not that difficult as presented by Mr. Amin, actually. It's a very manageable, I tell you. But we have to do certain things in our country, basically. In foreign country, we have no problem. We get the sample quality manuals and we adapt it according to our scale, right? And all guidance is available. It's not very expensive, but they are available. So we also may have to look for, because ISQM is going to be applicable internationally. All that would be available, that resources would be available and can be used, but you have to adapt it to those circumstances. Otherwise, it looks like so many things, we have to make policy things, all that, all guidance is there. Maybe at institute, we also have to provide certain guidelines, guidance notes, something. And second thing, what I see is another field of services coming up, providing the quality monitoring and that kind of services by various practitioners. It's very common outside Pakistan. Certain firms do provide that. And like external engagement review services there, ongoing monitoring is there, because it's come to individual when it comes to sole proprietor, so many roles come to one person, right? Many roles come to one person. There would be need for some other person, as Amin was saying, maybe due to cooling off period, there could not be anyone available. So that is talking about few partner firm actually. I'm saying, what about the individual sole proprietor?
There's never naturally any other person available. So these things have to be, but this standard is a brand new. It was in the earlier ISQC1, it was a very hidden in a paragraph. In risk-based engagement, you see, in our study, we learned one word, hot review. There was the concept of hot review. Some other person, independent person, knowledgeable person, looks at the file and before a report is signed. But now that role has been expanded. A lot of expansion there. Otherwise, the part of the monitoring, he was talking about monitoring and remediation. In the monitoring, this concept was there, but not so expanded as it is now. So there's no scalability in this case, unfortunately. If it's applicable, everyone has to do, whether it's a small firm or large firm. There's hardly any scalability here, right? So what is quality? Basically, quality means doing it right when no one else is looking. This is Henry Ford. And Aristotle, quality is not an act, it is an habit, right? Just like साइकिल चलानी आ जाती है तो हर वक्त चला सकते हैं. क्वालिटी एक दफा गियर हो जाती है तो हर दफा you will focus on quality, right? Systems are in place and tools are there. So basically, let's look at, audit is a teamwork, right? Not a single person is doing that. So they are juniors and they are suffering down there. They are semi-seniors, they are seniors, there's a job in charge, right? So their concept is there, okay? Now, this, let me tell you what it is. It's engagement-based, okay? Engagement-based. So what is standard requires, what is the purpose of this exercise of EQ review? Engagement quality review, what is the purpose? And second is, who's eligible for appointment and who appoints? And the third is, what the role and responsibility of that person who's appointed as engagement quality review. And the identifying the procedure which to be performed by that person and the potential threat to his work, his objectivity, and the additional areas of responsibility which has focus in certain circumstances. And requirement of documenting the work, like whole team is documenting the work. That person or his team, maybe a small team, maybe individual person, maybe one or two assistants, they also have to document the work of engagement quality review. Okay, it's client to client basis, basically. Purpose is basically, you see, engagement teams make a lot of judgments, significant judgment. There are a lot of significant matters on which they make conclusion. So, function of this role is to perform an objective evaluation of those significant judgment made by the team and conclusion reached by the team. Okay, that was a cold review, right? The file is in front of you and look through that and you see on this judgment, have they focused properly? And also the conclusion read was also objective based on the evidences. And same thing is here. Now, where is it required? It's not required in every audit. Where it's required in case of a listed entity. It's required where law and regulation requires that. Like public interest companies. In our AOB, it has been put there, public interest company. And definition of public interest company is very much inadequate, inappropriate, let me say. I'll show you one slide. It will say significant public sector company, significant. Here, every public sector company is included in that definition, okay? And third is where the firm itself determines that in these kind of audit engagement, they need to take a cautious approach and they have to appoint the EQ reviewer, right,
to address one or more risks there. Here I share with you one audit manual of a firm, a small size firm. And in manual, they have covered the engagement requiring EQCR, right? Audit quality review now, because it used to be quality control review. You see, where practice responsible to appoint that person where the set criteria which has been made there applies, okay? Assessment of whether EQ reviews required shall be made by the practitioner during the planning phase. This is not talking about the current standard. This extracted from the manual, which was the old manual, based on ISQC 1. Planning stage, you say who will be there, right? Because the old stages involvement was not required in the earlier case. Now, all stages involvement is going to come in. Okay, another is EQR review is required where this is the policy of the firm, where more than 25 stakeholder, partner, investor, beneficiary of your engagement is there. So you think this is where you should look at the appointment of engagement quality review. And also where your fees level exceed a threshold. Our fees is exceeding a certain percentage of your firm total revenue of that client. So you feel that's risky. And there's a problem with the acceptance continuation of the client when you assess the risk, engagement risk assessment, you found certain risks are there. And also you see there's a familiarity threat is there. The engagement team, there's a familiarity threat. Okay, so there you have to have this independent cold review, engagement quality review. And the ultimate, this firm decided this basically, right? Where the more than 25 stakeholders are there, and plus the fees is exceeding the $20,000 from that assignment. And we can dream this fees like that, you see. I know a lot of my firms, you see, are not getting more than even lakh rupees on an audit engagement. A lot of, right? We talk about this quality and all non-chargeable time, right? The audit fees are pathetically low. And there are many reasons for that. We have to engage the regulator. We have to do internally something. We have to talk to the competition commission where the things are stuck up. But the audit fees is miserably low here. And we are expecting a lot of time. And standards expecting a lot of time. And yes, it has to be. Time has to be there. But the problem is that here the 20,000 fees, then they say it's a big client. The client on which we have undue dependence. We could compromise the quality. And there. And here's a form, you see, where we assess first listed company. Yes, risk is there, ticket. Ethical issue, like familiarity threat. Yes, ticket. Then entity is high risk, significant public sector entity. That's what we're saying. Not every public sector entity, significant public sector entity, major pension fund, not for profit entity, revenue exceeding certain threshold like $10 million or something. Specialized industry, financial sector, maybe. High public profile of the entity you are auditing. JDW, right? High public profile. Ramzan Sugar, high public profile. Okay, and the revenue exceeding certain limit. Specific high risk factor exists there. It's a accounting standard for private enterprise. Like we have in Pakistan, we have one IFRS, and then we have IFRS, then for small and medium-sized entity, which size has come down too much this time because of they aligned the definition of SMIDA, the small and medium enterprise, and the threshold has come down.
The threshold 1 billion was fixed 15 years back. All over the world, threshold go up. I know the time when I was in UK starting my practice, for small entities, the threshold was 2.25 millions of pounds. 2.25. What is the current now? Again, after 15 or 18 years, 10.25 million. There's inflation. You are selling 50 units and getting less than 1 billion revenue, and you are not a significant large scale entity because you are getting less than a billion. You're getting 9.9 billion. And now with the same number of units you're selling now after 15 years, and the price is high, and same size of business, and now your revenue is 1.8 billion, double, and you are now large size company. Basically, this also over-regulated environment we have in Pakistan. We in ICAP prescribe the SCCP to recommend the application of International Financial Reporting Standard. To my mind, we have over-regulated at that time. At this moment also, we're not in a position to talk to regulators and tell them the definition of small and medium enterprises changed by definition of SMIDA State Bank is for purpose of financing and further purpose, not for reporting framework. But we have aligned, we, regulators have aligned to that. Okay. So these are IFRS are applicable, let's say. Complex accounting involved, transaction involved, derivative, hedges, stock-based thing, stock-based compensation, unusual financial instrument. And there's a questionable revenue recognition policy. Significant, like we have the telephone company, word call sometime, there was a very questionable revenue recognition policy, right? There was a change then. And the potential for fraud is there, material uncertainty like going concern, litigation going on, new and complex accounting standard has been issued, now become applicable. Risk factor identified in previous engagement are from preliminary activity. So we have to pick which risks are there. Okay, and then report user, widely held share ownership, not listed, but they have more than 25 or 30 or 50, whatever we decide in our policy. Single owner not involved in day-to-day business. Potential purchaser and investor are there because people are thinking to invest or disinvest in that entity. Government agencies are there, regulator, and experience of engagement team is it. New staff is there. Engagement partner rotation this year. Named partner has taken up as engagement partner role. Team has no previous experience in the industry they are engaged. So these are tick that. So at the end, we decide there whether EQR is required or not. And the manual we have said, if more than 2 factors exist, then we say EQR is required. If less than 2 factors exist, we just fill this form and say no EQR is required. So one is the listed company, other where the regulation or law is requiring, and third is where firm itself determine based on such list that there need to be EQR. Okay, who appoints? 3 kinds of appointment can be there. 3 aspects has to be looked at. First is it may be appointed by individual, a panel or committee of the firm, but never the engagement team determined. And also, he should not be the engagement team member. That person has to be independent. Right from the beginning, it has been said, right, even in the ISQC 1, has to be independent. Documentation has to be made for this appointment, and the rationale why that person has been appointed as a EQ reviewer. Okay, these are appointment eligibility criteria. We have to look at potential criteria. Like he is aware of all the applicable standard concepts and he understands the role of EQ reviewer, what is expected from him. He is aware of specific legal and regulatory requirements
He's aware of the firm policy, and he's aware about the firm policies and procedure toward the audit approach. He is aware of the entities industry, and he has a prior involvement, long association. He doesn't have the prior long association unless schooling period is over. He's not the engagement partner, EQ partner, reviewer, where a very senior to him is the engagement partner. There may be undue influence there. Okay. No reporting line ever to the engagement partner. And he meets the ethical requirement, as Amin was discussing about this, particularly independence. Potential source of information we need to look at. He has attended and completed EQR review training, and the other institute do hold these training sessions. Okay. The evidence on their continuing professional development training, finding a performance in the quality review, like already certain internal inspection has took place, we call it ongoing monitoring, and external inspection has been taken place, maybe by QAD, ICAP QAD, or maybe by UOB, and the prior engagement experience of that person has to be looked at. Has he ever was involved in the financial sector, entities audit, or never? And that is oil and gas. Was he ever involved in such audit? If he has never experience of such industry, he cannot be EQ reviewer for that particular engagement. And the result from the accreditation program, he attended such a program, he got a accreditation from there, and likely certain things have to look like the complexity of the assignment, the time required, his other commitment there, whether he would be able to do justice to this, his role as a engagement quality review. That has to be looked at when one is appointed as a EQ reviewer. What is expected to do in that role? Perform the EQ review, quality review, as I said. He understands the nature of the role, and he understands the entities and nature of the engagement. Overall responsibility, even his assistants are involved, lies with him. And he needs to have a timely involvement at all stages of the engagement, which he is going to review as a EQ reviewer. And I'll look at that in next slide. He knows the objective of his role is the objective evaluation of significant judgment made by the team and the conclusion reached by them. As we said, this is very much basic purpose of appointing the EQ reviewer. You need to obtain the evidence to support the evaluation of the previous point of the significant judgment and so the conclusion reached. You need to notify the engagement partner of the concern where you find the significant judgment and conclusion reached were not appropriate, and ability to word threat to his objectivity, right? His independence is not affected. He's basing his old decision on the basis of the evidence available. Ability to notify an appropriate individual in the firm. He was talking about many individuals who have the role, like he was also talking about the top leadership, where he cannot complete the review or he finds the significant audit quality deficiency. He has to let the top people know that. Ability to direct, supervise, and review the work of his assistant, like in the engagement team, the senior and the engagement partner have the role of direction, supervision, and review. And Mr. Amin was talking about these three aspects when we're looking at the monitoring. He was talking about that. Complete the EQ review checklist. He need to have some checklist about planning stage, completion stage, and during the performance stage. Okay, what's the difference between engagement partner and the EQ reviewer? He's responsible for the job, right? Performance job, issuing the audit report, right? Therefore, he has to have appropriate authority, right, from professional, legal, and regulatory bodies to do that. He's accountable to them as well if there's any failure in that. But his role, as we said, this one thing could be little surprising.
mention partner, other individual to the engagement partner. Can you think of another individual to be engagement partner in Pakistan? All partners have to hold the practicing lessons. But for the EQ, in world you are not required to hold your practice lessons, right? Therefore, he is a responsible individual, right? He is independent from the engagement team. He can look at the file, right? This is exactly word from this standard. Another individual. There, another individual, we can see that could be external person, could be a qualified professional employee of the firm. That's understandable. But here also, other individual. Because Pakistan is not applicable because anyone signing the audit report has to be holding the certificate of practice. And also partner of the firm. Has to be partner of the firm. Not employee holding the certificate of practice only. There, a partner, other individual of the firm, or an external individual appointed by the firm to perform the engagement quality review. And the audit we talk about what's the objective of that. Okay. Looking at, right, the evaluating objectively the work done by the engagement team, significant judgment made by them, significant matter, and quality of the report, need to document everything there. Okay, has to complete this assignment. It's a cold review. Oh, it's a hot review, sorry. Need to complete before the signing of the audit report. Okay, has to be involved during all stages of the engagement. Scoping, identifying risk, and assessing the audit risk, designing the audit responses, audit procedures, documenting the audit evidence, and reporting. It has to be at all stages. The EQ and reviewer has to be involved. This was not the requirement earlier. It was just to say who will be the reviewer, complete the assignment, put in front of you under ISQC1. Now it has to be engaged at all stages. Okay. So this requirement reinforced the exercise of professional judgment and professional skepticism by the engagement team, and also give the opportunity to promptly resolve all the EQ reviewers matter to the EQ reviewers satisfaction. And engagement partner cannot sign off audit report until his work is completed. Okay, what has changed? Expansion, you can see the requirement of significant judgment and significant matter has to be considered by him. New requirement, evaluating the professional skepticism applied by the engagement team. New requirement to evaluate the sufficiency of engagement partners' involvement in the whole process of audit. Earlier, no one was looking at that. This was not there. Okay, and now it's very much there. Like earlier, evaluate the basis of determining by the engagement partner the independence requirement, as how he ensured that team members are independent, meeting the independent requirement. Evaluate whether the appropriate consultation has taken place. Consultation is a very important process of achieving the quality, right? So this has to be looked at by this person. I'm going to come to this consultation. So basically, stop, stand back before you sign the report. This person is looking at and error is expected to be avoided. Procedure performed by the EQ reviewer. There are 8 steps and 9 steps is written. I'll show you that would be in case. Understand the nature and circumstance of the engagement. Discuss the significant matter and significant matter involved in that engagement. Review the selected engagement documentation and evaluate the basis of making significant judgment. Because the 2 required things was this area, significant matter and significant judgment, and then seeing how they have decided on that. Okay. Evaluate if the engagement partner's involvement has been sufficient and appropriate throughout, and evaluate consultation and how the difference of opinion among the engagement team was resolved.
evaluate engagement partner's determination about whether the relevant ethical requirement has been fulfilled. That's engagement partner job, to look at whether the ethical requirement fulfilled, including the independent, review the audit reports, and notify the engagement partner if there are certain concern about the file. But if there's a pattern of significant audit quality deficiency, then reporting the obligation to the firm, to the leadership as well. Sometime maybe story ends there, nothing goes beyond, because this thing is not there. The story ends there. But if there's a pattern of significant audit quality, so maybe another assignment also that's happening, right? Therefore, he has to inform the person who is responsible for overall quality. Our team is responsible. First procedure to perform is understand the nature and circumstances of the engagement. Okay. Obtaining and understanding the information communicated by the engagement team and by the firm, which can assist that person in understanding significant matter, which are expected to be there in the engagement. Equal reviewer understanding provide a basis for discussion with the engagement team about the matter and judgment they made at the time of planning, performing, concluding, and reporting the engagement. And if equal reviewer is newly assigned to the engagement, he need to look at prior year file. Someone has done the prior year EQR review as well. You should look at that file and see what points were identified, right, in that engagement. So he would have a better understanding about things. And if he's a reviewer, then he has to make a checklist of audit process, many additional questions he may have to ask and make himself aware of that in order to perform the effective EQR reviewer's role. Okay, at all stages of involvement of this person, acceptance, continuation, he will look at that, how that process was done, materiality, how was fixed, how the risk assessment procedure was performed, how the audit procedure was designed, engagement team's work, procedure which were carried out, and the audit expert were involved, and the related party transaction more focused to that, significant unusual transaction more focused to that, and the engagement team discussion and evidence of engagement partner involvement in the process. And also looking at these areas. He was talking about component audit. He was talking about the subsidiary company's auditor when he was saying the component auditor. Okay. So group audit, of course, there's a component auditor would be there. Misstatement, nature of misstatement, audit opinion, qualified, disclosure, are the unqualified, what type, going concern issue, fraud and fraud responses, and the change in the risk assessment and response to that. A general entry testing, general entries are made, you need to test those, they were valid and okay. And the significant estimate were made, look at them. Okay. So equal reviewer is required to be checking this as well, and for him also that is there. Remaining alert, he should see whether team was remaining alert or not. He himself is remaining alert or not when he's reviewing that, when his involvement there. Area of likely potential skepticism. Was the team was focusing on that? He is focusing on that when he's reviewing that. Action as the evidence of professional skepticism. Team was producing those evidence and he himself checking those evidence. And that where the skepticism, professional skepticism can compromise. One is budget constraint. Audit fees is very less. That's called budget constraint. And therefore, you want to do the work within that. So it should not become unprofitable. So the professional skepticism can compromise. Tight deadline to finish the audit. Lack of cooperation and pressure by the entity management. Insufficient understanding of entities. Less experienced engagement team. And difficulty in obtaining access to entity information and personnel to seek the information responsive to your inquiries, engagement team's inquiry. Over reliance on automated tools. It's very
it's also biased there. Any information produced by automation would tend to feel that's more reliable. That could not be the case. Okay. The other are certain biases like availability bias. We give more weight to the immediate event and information and experience. Confirmation bias, we give more weight on the evidence which that corroborates rather than which contradicts. Okay. And the group thinking involved, and then the more people of the group on one side, and could be wrong decision could be made in the consultation process, maybe in a certain risk assessment process. Okay. And the anchoring biases, looking at the initial pre-existing information more and basing yourself on that. Like mostly people go to the previous file and perform the same procedure what is performed earlier. Automation based bias, I already discussed that. Now, engagement partner, in short, determine this is the engagement partner role, particularly independent. His role is to look at whether that role has appropriately been performed or not by the engagement partner. His determination, the compliance to relevant ethical requirement is appropriate or not, particularly has a checked the independence. Okay. Should a consultation has taken place? I said I will talk about places where you need the consultation. Contentious issue, where the differences of opinion exist between the engagement team. So there should be a consultation. We have to see how that conclusion was reached in these cases. So engagement partner has to make sure, and this process was done properly. Equal reviewer evaluate whether engagement partner involvement has been sufficient throughout the assignment. He looks at that. This is the increased focus area of the quality standard. This has been added. And the engagement partner self-assessment about his involvement. Maybe there is something he himself put a checklist, complete that assessment. And the EQ reviewer looks at the indicator for lack of engagement partner and so whether he has appropriately sufficient time was given or not. Audit of financial statement, where it's applicable. Financial statement audit report are appropriate. Key audit matters has to be looked at by. Maybe there are more key audit matters, which has to be there. The engagement quality reviewer look at that and assess the presentation, disclosure of significant matters and judgment in the financial statement. Aware of other expected significant judgment which need to be included. He looked at that. And nature, time, and extent of audit procedure, which the review procedure which he has to perform, depend on complexity, depend on the information he gathered about as is relative to acceptance and continuation of client, and finding relevant to the engagement by the external oversight authority, which I said could be QCR of ICAP, could be audit oversight board. The nature and size of the entity, whether the entity is listed, and the deficiency and the remedial action related to from the internal inspection process, networks quality review, and maybe external inspection, like I earlier said, the maybe QCR, maybe the AOB, assessment of risk of material misstatement and responses to that by the engagement team. Not need to compromise on his professional judgment, which could be because of bias, conflict of interest, or undue influence by the other. He should not engage himself in any professional activity where his relationship could be duly influenced his professional judgment regarding the activity like review of the file. And he also has certain threat, self-review. He might be involved earlier years, and that information processed by that system is being audited now. Familiarity threat, he has a close relation, immediate family member in the engagement team, or he is the engagement partner, and he faces the actual perceived pressure, maybe within the firm, maybe from the engagement partner, maybe group of partners, and you need to make decision on behalf of, he should not be a case where he was involved in making a decision on behalf of the engagement team.
independent, total independence has to be there. So he has to look at the period. He was earlier involved, maybe as an engagement partner, maybe as a key audit partner already. Not as in the capacity of EQ reviewer earlier, in the key audit partner or as engagement partner. Then cooling off period, here comes in the ethics, where they prescribe that in certain years, the cooling off period, like mostly 3 years should be there. He should report the threat to the, he should report the threat to the objectivity, to the firm, and think of replacement of EQ reviewer if that threat cannot be removed. Okay. He has to do proper documentation. Like audit documentation, a person independent can understand the nature, time, extent of the procedure performed by the engagement team. Similarly, when he performs the work, documentation should be that independent person, when go through that, he could reach the same conclusion of the engagement quality review. Okay. Already said the date of completion of EQ review should be documented. It has to be earlier than the audit report. Okay. In these cases, the more documentation would be required. Right? If these engagements are involved, these steps are involved, then we have to have more documentation. Thank you very much. So basically, this is a cold review. Hot review, sorry. It is a hot review. Before you sign, the more formality has bring in. A small firm, a large firm, it does not depend on that. It depends on the nature of the engagement, right? This is the only thing. Thank you. Thank you very much, sir, for such an insightful presentation on the engagement quality reviews. May I request you to please give a big round of applause to both of our presenters. As we have discussed, that the world is facing the challenges. The changing environment requires some challenges faced by the professional firms. For that, we have arranged a panel discussion where the gurus, the seniors, professionals will discuss how the challenges for implementation of the quality management standard in Pakistan. For that, we have a panelist, Mr. Rashid Rahman Mir, the past president ICAP. Sir, may I request you to please come on the stage. Please give a big round of applause. The second panelist, Sir Mr. Muhammad Maqbool, Council Member ICAP. Sir, may I request you to please join on the stage. Anyway, the stage is yours. May I request Mr. Muhammad Almas, the partner, Almas and Co, please join us the stage. May I request Mr. Amin Ali to please come on the stage. May I request Mr. Naseem Akbar, sir, please come on the stage and join us. For that, for this panel discussion, we have a moderator, and that is Mr. Asad Feroz, the council member of ICAP. May I request you to, sir, please come on the stage and take the charge. I will request all the participants that we have this panel discussion, then there is a question answer session that will be held soon after the Maghrib prayer. So please keep your question with yourself. So we will be having a detailed discussion after the Maghrib prayer. Over to you, Mr. Moderator. Thank you very much, Adnan. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, audience at Lahore and audience that is watching us over the Zoom. Thank you very much. अच्छा जी, अलमास साहब आपके पास आता हूँ। हमने दो बड़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस सुनी। पहले में अमीन ने हमें ठीक ठाक डराया, फिर मकबूल साहब ने हमें हौसला दिया और हौसला देके भी डराया। तो खैर हौसला देके डराया सही, मगर हौसला भी दिया साहब। तो
तो सर चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप ISQM को इम्प्लीमेंट करते हुए? Over to you. You know, no doubt there has been much improvement. But one thing we should take for granted that quality varies with the size. You know, the greater the size of this is something which you cannot, compromise, and that's true. उसमें ये है कि जो ISQC1 था, it was also delivering with, but there were certain problems in it. And one problem we came across was about 2.5 years ago. A firm, relatively large size firm, excellent performance so far as ISQC1 is concerned, but when it get down to the engagement level, the performance of the same firm was, I would say, below average. Although AOB has its own terminology to call it, they went calling it something else, but it was not as to the mark. So the question arose, how come a firm having a very good system of ISQC1 and which we didn't find any exceptions, didn't perform well in the engagement performance? And the same thing, was brought up by AOB as well. Then we started looking around, and when we saw the same tremors were felt elsewhere as well by various, quality control boards, quality assurance organizations, and public oversight boards as well. And then we went to the IFAC website and IASB, and we found out that they are already have felt this fact that, the quality, the metal test, the litmus test is the engagement quality. Doesn't matter how good your firm level quality control is. So in this new standard, if you look at, there were 6 elements in ISQC1, and there have been 8 components in this new quality control, quality management standard 1. And I know you all know the difference between an element and a component. And for that, we see that they have called it iterative and integrated, while they were standalone, and these are sort of integrated and iterative in a way that they go through to the end, while those were standalone sort of compliance-based, I would call it, compliance-based standalone elements, while these are risk-based sort of quality assessments, और अगर आप देखें तो पैटर्न एग्जैक्टली वही है, कुछ नहीं बदला. जो रिस्क असेसमेंट, अगर आप मुझे कहें कि अलमास तुमने ये रिस्क असेसमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल में the most of the guidance I would derive from ISA 315. बदला क्या है? वहां पे जो पहला कॉलम होता था, सोर्सेज ऑफ रिस्क, वो क्या थे? डिफाइंड है उस स्टैंडर्ड के अंदर, प्रॉब्ली 9, 6 वो हैं और 3 उसके हैं वो फ्रॉड एंड एरर के. यहाँ पे I will go to the ethical standards. I would go where the firm can go wrong. वो ethical standards हैं, उनमें जा सकता हूँ, और मेरी जो अपनी internal firm की policies हैं, उनमें there could be certain deficiencies. And then the next column again, exactly the same. What can go wrong?
और उससे आगे मेरे वहाँ ऑडिट असर्शंस आते थे, यहाँ पे मेरे क्वालिटी रिस्क आ जाएंगे। और फिर ऑब्वियसली चल से चल है कि यू नो हाउ टू एड्रेस दोज एंड रिमीडियल एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमारे लिए शायद ये इतना मुश्किल ना हो, क्योंकि हम कम से कम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की रिस्क असेसमेंट करते हैं, ये उसी का एक रेप्लिका है। अगर आप देखें ना कि अब एग्जैक्टली वही उसने पाथ और वही पैटर्न यूज किया है फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फर्म। तो एक ये है। फिर आज खास तौर पे जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड बनाने वाला है उसने तो हमें कहा था कि दिसंबर 2020 से दिसंबर 2022 के दरमियान तुमने 3 काम करने हैं, और टोटल 4 काम करने थे। एक काम सिर्फ ऐसा है जो हमें बाद में करना है, दिसंबर 2022 के बाद। मसलन रिस्क असेसमेंट का जो पहला एलिमेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। उसका तो दिसंबर 2022 से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज भी बैठ के अपनी फर्म में देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। और ये बाकायदा कहा गया कि ये चीजें हमें पहले कर लेनी चाहिए, दिसंबर 2022 से पहले। दूसरा है असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ दोज रिस्क। अब बताइए यहाँ दिसंबर 2022 कहाँ अड़े आता है? आप आज भी कर सकते हैं, कीजिए, जरूर कीजिए। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। आपने अपनी जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिटरमिन कर लिए, रिस्क आइडेंटिफाई किए टू क्वालिटी और उनको असेस कर दिया। फिर असेस रिस्क की जो रिस्पॉन्सेज थी वो भी यू कैन डू इट बिफोर दिसंबर 2022। बाद में तो फिर एक चीज वो आ जाती है कि वो जो रिस्पॉन्सेज हैं टू असेस रिस्क बेस्ड ऑन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कुछ तो अभी भी हो सकती हैं, कुछ जब आप एक्चुअल परफॉर्म करेंगे अंडर दिस न्यू थिंग तो वो सब सामने आएंगी। एंड देन ऑब्वियसली रिमीडिएशन एक्सेट्रा ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि वी शुड नॉट वेट फॉर December, we should rather start it because there is nothing barring us to start work thereon. तो बाकी जो differences बताए गए हैं वो those are good for academic sake of discussion. पुराना भी इतना बुरा नहीं था, हमने पुराने में से बहुत कुछ लिया भी है। ये जो 8 हैं इनमें से 2 नए हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट वाला नया है और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन दैट इज द न्यू वन। 3 पुराने एज सच लिए हैं और 8 पूरे कर रहा हूं, और 3 वो हैं जो अडेप्ट किए गए हैं। मीन दे हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड बट विद सर्टेन अडेप्टेशंस। तो काफी सारी चीजें हैं। बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एंगेजमेंट लेवल है, जिसको मैं कहा करता था कि ये ISQC1 का 70% है, क्योंकि वी न्यू कि जो पोर्ट्रेयल ऑफ योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर उसकी है क्वालिटी की, दैट कम्स फ्रॉम द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अगर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर वो सारा गलत है या ठीक नहीं है, दैट नीड्स टू रिविजिट। तो वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो ISQC1 में था, और मुझे अच्छी तरह याद है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके सेक्शन 5.1 to 5.7 तक एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं उसमें करी उन्होंने। एक नया स्टैंडर्ड दिया फॉर हॉट रिव्यू,
पिछले वाले में भी हॉट रिव्यू के ऊपर बहुत कुछ था, वेल इसमें बहुत सारी नई चीजें जरूर लाए हैं, लेकिन जो मेन, जो मैंने उस दिन भी आपके सामने स्टेटिस्टिक्स दिए थे कि पाकिस्तान में जिनको क्वालिटी स्टैंडर्ड 2 लगेगा वो तो टोटल 515 कंपनीज हैं कुछ इस तरह से। 512 थी लिस्टेड कंपनीज और 303 थी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज। तो ये जो अभी मकबूल साहब ने किया, ये सिर्फ इन 512 और 303 के ऊपर लगता है पाकिस्तान में, अनलेस द फर्म मेक्स गोज फॉर द थर्ड ऑप्शन, कि वो अपना जो उन्होंने क्राइटेरिया जो बनाना चाहिए, और ये पुराने में भी था, और वो क्राइटेरिया बहुत वेटेज के साथ था उसमें कि इन 2 के अलावा भी आप तीसरा बनाइए। तो वो वही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि छोटी फर्म वाले डरे नहीं उससे, जो मेन कोर है वो अभी भी वही है। एक नई चीज आई है, 3-4 नई चीजें आई हैं। जो एक नई चीज आई है वो है रिस्क असेसमेंट। और भाई वो रिस्क असेसमेंट तो आप यूं कीजिए कि जस्ट गो आउटसाइड योर ऑफिस एंड देन एंटर आफ्टर अबाउट फ्यू मिनट्स एंड जस्ट इमेजिन दैट यू हैव कम टू द क्लाइंट्स ऑफिस and you are here today to do the risk assessment at financial statement level. Exactly वही चीजें हैं। वहाँ क्लाइंट के वहाँ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑडिट असर्शंस थे, यहाँ आपके, और मैं नर्सरी भी आपको बता दी कि आपको ऑडिट रिस्क, आपको जो पोटेंशियल रिस्क हैं वो कहाँ से मिलेंगे। वो कहीं से नाजल नहीं होने दिसंबर 2022 में, those are already there, वो लिखे हुए हैं, यू नो। तो अभी आपको उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए, और आई कैप को भी आई एक्सपेक्ट दे विल आल्सो कम अप हेल्पिंग, और इंशाल्लाह एक बेटरमेंट की बात बनेगी। थैंक यू। थैंक यू अलमा साहब। आई मस्ट से कि बड़ा डिटेल में आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया। राशिद साहब आपके पास आएंगे। आपने भी दोनों प्रेजेंटेशन सुनी, अब क्या चैलेंजेस आप फील करते हैं ये नए क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पोज करेंगे फर्म्स के लिए? पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और फिर अगेन मैं आपका और मकबूल साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव समझता हूँ कि वक्त से पहले इस नए स्टैंडर्ड से हम आप मेंबर्स में अवेयरनेस की कैंपेन कर रहे हैं, एंड विच इज़ रियली वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं इसमें, कहने को तो बात का बहुत आसान लगता है कि ये दोनों स्टैंडर्ड्स पुराने ISQC1 से ही एमिनेट कर रहे हैं, और अब ज़रा उसको 8 कंपोनेंट्स बना दिए, उसी में से एलेबोरेट करके रिस्क असेसमेंट वाला बात, कम्युनिकेशन तो पहले भी थी। लेकिन जब आप इसको डॉक्यूमेंट करने के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों देख के, कि इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसमें क्वालिफाइड पर्सनल के ऊपर हमारी बहुत एम्फेसिस है। जैसे आपने कहा कि जो ओवरऑल क्वालिटी CEO के पास है, पहले भी थी। अब कंप्लायंस के लिए आपने 2 बंदे रख लिए, एक ऑपरेशन कंप्लायंस के लिए, फिर उन दोनों को चेक करने के, बल्कि उन तीनों को चेक करने के लिए एक चौथा बंदा उनका मॉनिटर भी रख लिया। अब जब इस तरह की आप उसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, सिर्फ लार्ज साइज फर्म के लिए भी होगा, और छोटी फर्म्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर तीसरी बात जो मैं कहता हूँ, जब मैं अपनी एनवायरनमेंट देखता हूँ पाकिस्तान की, तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ही गियर्ड नहीं है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपसे कोऑपरेट करने के लिए, आपके ऑडिट में आपको असिस्ट करने के लिए। तो इस तरह की स्ट्रिंजेंट एनवायरनमेंट में जब आप इतनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, और आई डोंट नो कि हम लोगों से उस कॉस्ट को रिकवर कर सकेंगे कि नहीं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। तीसरा मैं देख रहा हूँ बार बार हम इसमें कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी फर्म्स को रिलायंस जो है अपनी जो आर्टिकल क्लार्क्स के ऊपर ट्रीज पे कम करनी पड़ेगी।
और अगर और उनको ज़्यादा मखल में एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड स्टाफ लेना पड़ेगा, और फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी रिलायंस करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजीज पे देखना पड़ेगा। जैसे ऑडिट सॉफ्टवेयर को तो है ही है, इसके साथ इसकी ISQCM की सॉफ्टवेयर भी लेनी पड़ेंगी। फिर जो सबसे नई चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इसमें, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप ये होगा, EQCR जो पार्टनर या जो पर्सन होगा वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ऑडिट्स के लिए और आंसरेबल होगा, उसको प्रॉपर ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये सारे ही चैलेंजेस हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा कि इसको हम दिसंबर में एकदम से इम्प्लीमेंट कर लें, पर्टिकुलरली जब काउंसिल ने भी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कोई डिसीजन नहीं लिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है। वो IASSB की डेट अपनी जगह पे है, लेकिन हमें रीजनेबल टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन तो उसके बाद से काउंट होगा हमारे मेंबर्स के लिए, जब काउंसिल एक डिसीजन लेती है कि इन प्रिंसिपल कि जी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसमें मुझे यूँ लगता है हमें एक रीजनेबल टाइम ऐसा देना चाहिए कि जिसमें प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए पॉसिबल हो के कर सकें। तो बल्कि मैं कहूँगा मेंबर्स से भी हमें फीडबैक लेना चाहिए कि वो क्या समझते हैं, अगर हमें इसको अप्लाई करना हो तो क्या है। और एक हाँ बड़ा फ़र्क जो मैंने इसमें देखा है, वहाँ पे पहले ये था कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी था, बाकियों को इनकरेज किया हुआ था इन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन के। अब इसकी कोई बात नहीं है। नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फर्म्स इरिस्पेक्टिव कि वो लिस्टेड का, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का कर रही हैं या कोई और ऑडिट एग्जीक्यूट करें, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये उनके ऊपर ISQCM 1 तो इम्प्लीमेंट होगा। ISQCM 2 उनके स्पेशल क्लाइंट्स के लिए कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, तो उसमें शायद सेलेक्टिविटी होगी, अदरवाइज तो उसमें मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आता। तो ये एक ज़्यादा बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ये नहीं एक बंदा कह सकता कि जी मैं तो लिस्टेड एंटिटी या PSC का ऑडिट नहीं कर रहा तो ये मेरे पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये उसके लिए ये होगा, ये क्रॉस ही बोर्ड सारी फर्म्स को ये इम्प्लीमेंट करना होगा। और जो बुरी चीज़ ये है मुझे लगती है वो ये है कि बहुत सारी एंटिटीज़ के जो ऑडिट हैं वो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऑथोराइज हैं ऑडिट करने के लिए। तो उनके साथ जब हमारा कंपटीशन होगा, हमारे पर ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, उन पे नहीं होंगे, तो शायद हम उतने कम्पिटिटिव ना रहें। दीज आर द चैलेंजेस जो मेरे जहन में आ रहे थे। और जो सबसे बड़ी थ्रेट जो मुझे इंस्टीट्यूट के फ्यूचर के लिए लगती है वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहाँ से आएंगे। और मैं जो देख रहा हूँ इन स्टैंडर्ड्स के साथ आप स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। और इसको देखना है। और हाँ एक आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि लोगों के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये माइंडसेट जो है जनरली स्पीकिंग मैं देखता हूँ एक्सेप्ट द साइनिंग पार्टनर के अलावा मैं किसी और स्टाफ मेंबर में नहीं देखता कि जो उसकी ओनरशिप लेता हो कि ये मेरा काम है, ये नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इन सारी चीज़ों को डिबेट भी करना है, उसको थ्रेश आउट भी करना है, प्लानिंग भी करनी है, इनकी कॉस्ट को कैसे हमने बियर करना है, और फिर इसको रिकवरी कैसे होगी। इन सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए मुझे लगता है कि दिसंबर तक का टाइम बहुत कम है, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, इसे देखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू राशिद साहब। मेरे ख्याल है बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। अरसलान बैठे हैं, चेयरमैन है हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी के। आइडिया यही था कि हम अवेयरनेस सेशंस करें और फिर उसके बाद जो भी फीडबैक आता है वो फिर हम काउंसिल में लेके जाएं। तो ये पॉइंट्स डेफिनेटली हमारी टेक्निकल टीम नोट कर रही है। इससे पहले कि नसीम साहब आपका इनपुट लूँ, हमने एक नमाज ब्रेक लेना है, तो हम 15 मिनट का नमाज ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो 15 मिनट का नमाज ब्रेक लाहौर में और बाकी स्टेशन में भी। तो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद इंशाल्लाह हम वापस आते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू।
बहुत पुरानी बात है और उस वक्त इतना ओवर रेगुलेटेड या रेगुलेटेड प्रोफेशन नहीं चल रहा था और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन चीज़ों से मुबर्रा थी। लार्ज फर्म का हिस्सा या बिग फोर का हिस्सा होने के नाते इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैंडेटरी करते थे और जिनके प्रोसेसेस इवॉल्व हैं। अभी जिन पोजीशंस की बात हुई कि सीईओ और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और सारा, इसके अलावा एक दो पोजीशंस जो कि मुझे इस स्टैंडर्ड से और मेरे ख्याल में हैं, उनका हमने जिक्र नहीं किया और उन पोजीशन में कंसल्टेशन प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के तौर पे बताया गया है और हर सेंसिटिव एरिया जहाँ पे कंसल्टेशन चाहिए वहाँ पे उसको भी डॉक्यूमेंट होना और उसका होना भी एक मेरे ख्याल में लाजमी अमर है। कंसल्टेशन में भी बेसिकली दो प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसमें एक ऑडिट रिलेटेड है और दूसरा अकाउंटिंग या आईएफआरएस टेक्निकल है और इसमें दो तरह की कंसल्टेशन है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, जैसे राशिद साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं और इसमें इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही इतनी है पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करने के लिए कि विदाउट प्रॉपर असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ आई कैप शायद एसएमपीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होएगा और उसमें आई कैप को एक बड़ा पिवटल रोल प्ले करना पड़ेगा टू सपोर्ट दी प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक बड़ा इशू है। जिस क्वालिटी और जिस स्टैंडर्ड की यहाँ पे ISQC 1 में या 2 में बात कर रहे हैं, 2 तो अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो पब्लिक सेक्टर या पाइस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो 1 तो ऑल पे है। तो 1 पे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको देखते हुए जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज चाहिए उसमें भी आई कैप जब तक लीड प्रोवाइड नहीं करेगा तो शायद इसको अडॉप्ट करना मुश्किल फेस होगा। दूसरा, मकबूल साहब वेरी लाइटली सेड लंदन की एग्जांपल दे के वन पार्टनर और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी वहाँ पे एवेन्यू है। तो हमें अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को देखते हुए और हमारा जो मेंबर्स का कॉन्फिडेंस पहले भी QCR की वजह से या इंडिपेंडेंट रिव्यू की वजह से टू अ पॉइंट थर्ड पार्टी वाला इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो शायद हम लोग उसके लिए भी इतना कोई इत्मीनान बख्श सॉल्यूशन उसे ना समझें एंड विल हैव टू गो फॉर। और इसमें मुझे मर्जर एंड पार्टनरशिप्स ही सॉल्यूशन नज़र आते हैं। टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेज की जो बात है उसको अफोर्ड करने के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल मसल्स, अगर मैं फाइनेंशियल मसल्स ले आता हूँ और मुझ में IFRS और ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्निकल मसल्स, या हर चीज़ पे तो यू कांट से कि आई एम मास्टर ऑफ एवरीथिंग, तो कंसल्टेशन प्रोसेस और टेक्निकल प्रोसेस ऐसे हैं जिसके लिए मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत है और रहेगी। अभी भी मकबूल साहब विल विटनेस कि मुझे कहीं पे कोई IFRS रिलेटेड या कोई ऐसा मैटर कोई होता है तो मैं मकबूल साहब को भी बाज़ औक़ात कंसल्ट करता हूँ और सलाम को करता हूँ। ये एक एवेन्यू है जो सबको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, बट उसको पहले तो फॉर्मली डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, अब फॉर्मली डॉक्यूमेंट करना है। उसके ऊपर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दी ओपिनियन डिपेंड करती है। तो मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड ओपिनियन दी गई है, क्या कोई मुझे इजाज़त देगा कि मैं उसका नाम ऑन रिकॉर्ड कर दूं और वो भी मेरे साथ पार्टी बन जाए अगर इफ़ माय ओपिनियन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो उन चीज़ों में जो मुझे इस स्टैंडर्ड से नज़र आता है कि पार्टनरशिप्स इज़ द सॉल्यूशन। और पार्टनरशिप में जो व्हेन आई स्टार्टेड दिस न्यू वेंचर, तो मुझे मार्केट का इतना नहीं पता था कि कैसे फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स का पता चला कि कहीं पे अगर मैं नाम यूज़ करना चाहता हूँ ABC, तो मैं उसको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ फी पे करूँ और वो टाइटल यूज़ करके और उन चीज़ों को मैं करता। दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप आई फील, और अब इन स्टैंडर्ड के साथ आई बिलीव कि वो सेल्फ डिसाइसिव हैं, वो अपने आप को
एक ऐसी जगह पे रखने के लिए हैं जहां शायद किसी मंजिल पे पहुंचना मुश्किल है, और उसमें ना एक दूसरे को फाइनेंशियल और ना टेक्निकल सपोर्ट देने की पोजीशन बनती। जो रियल पार्टनरशिप्स हैं, लाइक शेयरिंग बॉटम लाइन एंड प्रोवाइड शोल्डर टू ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट, उस तरह की पार्टनरशिप से ही ग्रोथ आएगी। इसमें सबसे बड़ी जो रिलक्टेंस होती है वो ये होती है कि जी क्लाइंट से फीस लेना जो है वो इज डिफिकल्ट। I 100% agree with that. I am also facing that. But with that reference, I would say कि it is said कि everybody has a cost, price. तो मुझ पे भी ये डिपेंड करता है कि मैंने अपने आप को किस प्राइस पे टैग किया है और मुझे उसके लिए क्या एफर्ट्स करनी है। और मैं not only play with my goodwill, I also play with the goodwill of CA पाकिस्तान, जो लार्जली सबको इफेक्ट करती है। और हम रेगुलेशन से ओवर रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। आज हमें SECP ने भी पैनल, ऑडिटर्स पैनल के लिए लेटर लिख दिए हैं और हमें उस पर भी आना है। तो इसमें एक डेलिब्रेटेड और थॉटफुल डिस्कशंस की ज़रूरत है एट द पार्ट ऑफ द SMPs, and they should come to some conclusion कि at what price and at what value they want to dish out themselves। उन चीज़ों को लेके, अदरवाइज ये हम जो चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक टेक्नोलॉजी आ गई, रिस्क असेसमेंट आ गई, इफ़ आई डू ऑल दैट तो उस रिस्क असेसमेंट को मैं क्या करूँगा बेसिकली। तो इफ़ आई एम आफ्टर द बॉटम लाइन ऑफ माई बिजनेस, तो आई वॉन्ट see the risk assessment or anything else. I'll just see where to sign and when to sign, which in my opinion coming in AML, CFT and such requirements अब possible नहीं है। we are trying to protect clients whereas they'll not come to protect us। Abatement और वो सारे laws are very well in place, और सिर्फ ये है कि किस वक्त क्या चीज़ किक इन होती है उसको हमें देखने की जरूरत है। दूसरा, व्हेन आई वाज फॉर दिस सेशन आई वाज स्कैनिंग थ्रू दीज स्टैंडर्ड्स, तो जो गवर्नेंस का चैप्टर है और जहां लीडरशिप की बात की है, वहां उसने एक पॉइंट दिया है प्रोफेशनल ethics, value and attitude. So when I read this line, so I thought, why value and attitude? Skepticism या professional ethics, या this all is there, और मुझे professional ethics के standard दे दिए गए हैं जिनकी मैंने compliance को ensure करना है। तो I went into the dictionary of black laws and साइकोलॉजिकल डिक्शनरी। जो एटीट्यूड है, मुझे उस सब फ्रेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड फील हुआ। और एटीट्यूड के जो लीगल मीनिंग्स दिए गए वो ये है कि टू सेटल समथिंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। साइकोलॉजिकल मीनिंग में इट इज सेड कि टू सेटल समथिंग नेगेटिवली और पॉजिटिवली। So this is a state of mind. If I नेगेटिव और पॉजिटिव पे जाएं, तो नेगेटिव में मेरा एटीट्यूड नॉन एक्सेप्टेंस का है कि यार ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, आई विल फ्रेम सम डॉक्यूमेंट्स जस्ट टू सेटिस्फाई ICAP and I'll do whatever I'm doing. But if I'll go towards positivity of that, so that will lead me towards adaptability and change. Without having positivity in the attitude, adaptability नहीं आ सकती। तो इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इफ वी टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप भी, और फर्म को डिफाइन किया गया तो उसमें सोल प्रोप्राइटर को भी लिया गया है, स्मॉल प्रैक्टिसेस को भी लिया गया है, सबको लिया गया है। तो देन आई एम बॉस ऑफ माई सेल्फ, और उसमें भी मुझसे ये रिक्वायरमेंट है
कि मैंने प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड तीनों के ऊपर बिहेवियर को अपने लेके आना है। और वैल्यूज में आई कांट से कि आई एम डिसऑनेस्ट, आई विल हैव टू से कि माय वैल्यू इज टू बी ऑनेस्ट। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो मेरे ख्याल में तो देयर इज़ अ बिग शिफ्ट, जो कुछ हम कर रहे हैं और जो कुछ हमें करना है उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें विल बी अ गाइडलाइन एंड दोज विल डिफाइन द रूल्स, और उनकी एनुअल और पीरियोडिक इवैल्यूएशन विल पेव द वे फॉरवर्ड। इसी कंसेप्ट को यू मैं इफ आई रिलेट टू इस्लाम, आई डू नॉट प्रीच बाय द वे और तबलीग में, लेकिन करना एक हमारी सुन्नत भी है और वो सारा। तो इस्लाम में जो अरकान दिए गए, तौहीद और ज़कात और हज सारा, तो उसमें तौहीद के बारे में अगर कोई उससे मुनरिफ होता है तो शिर्क और शिर्क का आगे बहुत ज़्यादा फिर जो भी है वो दिया गया। लेकिन जिस चीज़ पे ये कहा गया कि और वो हम में से नहीं, वो इनमें से कोई रुकन नहीं है, और वो ये कहा गया झूठ पे, जो कि इन अरकान में शामिल नहीं है, उसको कहा गया, उस पे कहा गया और वो हम में से नहीं है। तो व्हेन आई रिलेट ऑल दीज थिंग्स टू दीज स्टैंडर्ड्स, एथिक्स एंड ऑल दैट, तो बीइंग मुस्लिम आई फील कि it is my mandatory duty to go for whatever is right. और बाकी जो चीजें हैं वो मेरा ख्याल है कम सेकेंडरी। थैंक यू नसीम साहब। राज साहब आपके पास आऊँगा। अभी प्रेजेंटेशन में भी बात हुई, अलमास साहब ने भी जिक्र किया रिस्क बेस्ड अप्रोच की। एक स्मॉल रिस्क बेस्ड अप्रोच जो यहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट से मैं कहूँगा कि जो इसमें एक आने जा रहा है। अब ये रिस्क बेस्ड अप्रोच किस हद तक चैलेंजिंग होगी किसी स्मॉलर फर्म के लिए इम्प्लीमेंट करना इस अप्रोच को, तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, कोई भी बंदा जब काम करता है तो सारे काम हम लोग रिस्क बेस्ड अप्रोच पे ही करते हैं। सिर्फ इश्यूज आ रहे होते हैं जब हम आपको इन चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करते हैं, और मेरी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि हमारे यहाँ पे रेगुलेटर्स के लिए हमने करना होता है, और इनफैक्ट मैं पूरा ISQCM वाला फॉर्म जो है, ये जितने भी मैनुअल्स हैं ये हम क्यों बना रहे हैं? क्या हमारा जो डिलीवरेबल चेंज हो जाता है? वो तो वही रहेगा, उसकी क्वालिटी में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। इट इज़ प्रैक्टिकली हम अपने आप को रेगुलेटर से बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। छोटी फर्म्स को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता अपने आप को रेगुलेटर से बचाने के लिए, क्योंकि उनके हाई रिस्क असाइनमेंट्स नहीं होते हैं। बड़ी फर्मों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना आसान है। जब रेगुलेटर आके पूछेगा तो कहेगा जी ये काम मैंने किया हुआ है। छोटी फर्मों के लिए प्रॉब्लम ये होता है, उनको अपना डिफेंड करना नहीं आता। जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमारा रेगुलेटर और आइडियलिस्टिक है, तो वो कहता है ये तो तुमने मेरी पसंद का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ, इसको तो यूँ होना चाहिए, इसको तो वो होना चाहिए। एंड देन इट्स, क्योंकि छोटी फर्म के पास ना रिसोर्स होते हैं, ना उनको आर्गू करना होता है, ना वो लंबी लिटिगेशन में जा सकते हैं, तो उनको ये फिर चैलेंजेस ज़्यादा पेश आएंगे। बाकी तो मुझे लगता है कि रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स करना, उसके बेस पे करना, काम करना उनके लिए मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट करना भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम छोटी फर्मों के लिए ज़्यादा ये होगा कि हमने रेगुलेटर को कैसे करना है। ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ हुआ है, इस स्टैंडर्ड में स्केलेबिलिटी दी गई हुई है। जो स्केलेबिलिटी आप यूज़ करेंगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी आर्बिट्रेरी, क्योंकि इस स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी डिलीवर करना नहीं है, सॉरी टू से, ये अपनी स्किन सेव करना है, जिसको हम क्वालिटी का नाम देके हम अपने लिए यूज़ करते हैं।
थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम सच की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ हम थोड़ा सा हिपोक्रेट हैं। हम कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। तो हम क्वालिटी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हम अपनी स्किन को सेव करना चाहते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें कहना चाहिए कि हम इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं ताकि हमें लिटिगेशन में कम से कम है। जिस तरह अमेरिका में डॉक्टर क्या करते हैं कि इतना बड़ा पुलंदा बना लेता है अपनी फाइल का, पेशेंट की उसको वेल बीइंग से नहीं कंसर्न है, उसके इस बात से कंसर्न होता है कल को कोई मुझे लिटिगेशन में ना लेके जाए। नो बडी शुड ड्रैग मी। यही अब मुझे लगता है हमारा भी बनेगा। वो मकबूल साहब ने लफ्ज़ यूज़ किया था ओवर रेगुलेटेड हैं हम। मैं कहता हूँ हमारे रेगुलेटर आइडियलिस्टिक हैं कि एनवायरनमेंट को नहीं देखते, जगह को नहीं देखते, और वो डॉक्यूमेंटेशन का जब स्केलेबिलिटी की भी बात करते हैं तो वो और आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। अगर मैं जाऊंगा तो शायद वो कहेगा कि ये देखो ये बाबा है तो चलो इसका लिहाज कर लेते हैं, कोई यंगस्टर जाएगा तो शायद उसके साथ सख्ती हो जाए। तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा फिक्र है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो भी रेगुलेटर्स हैं, मैं किसी एक रेगुलेटर का नाम नहीं लेता, माशाल्लाह हमारे बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जिसमें आई कैप भी आता है, SCCP भी आता है, AOB भी आता है, NAB भी आता है, FIA भी आता है, माशाल्लाह सारी रेगुलेटर्स अब हमें पूछते हैं। तो इन सब को सेटिस्फाई करने के लिए वो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी क्या हम बनाएं, तो उसमें अनलेस के हमें कोई पॉजिटिव इनपुट आई कैप की तरफ से नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि SMPs वगैरह इसको मीनिंगफुल तरीके से जो पर्पस है हमारा, जिसको कहते जिसके हम अपने आप को सेव कर सकें कि जी हमने प्रॉपर काम किया हुआ है, उसकी एविडेंस क्रिएट कर सकें, तो उसका कोई फ़ायदा होगा। तो मुझे ये लगता है, बाकी उसमें रिस्क बेस में कोई इशू नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज आएंगे, और उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन, कोई गाइडेंस हमें मिल जाए। उसके लिए अगर आपको चार्ज करना हो तो रीजनेबल सा चार्ज भी कर लें, तो मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं है। तो बेसिकली आप राज साहब ये कह रहे हैं कि आई कैप इस पे कोई स्टैंडर्डाइज गाइडेंस डेवलप करे और वो मेंबर्स के लिए डिसिमिनेट करे ताकि उनको लिए अवेलेबल हो। और बिल्कुल ठीक हो। वो बाइंडिंग अपने रेगुलेटर अपने स्टाफ के ऊपर भी करें, जो QCR वाला है उसको भी उसको कंप्लायंस करना, उसको इंश्योर कराए। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा अपने हमारे दोस्त हैं मकबूल साहब, इनसे बात करते हुए, आपसे भी बात करते हुए बात की, हमारे यहाँ पे जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं लोग, तो वो आके वो उन्होंने ISQC1 की चेकलिस्ट बनाई होती है, तो इतनी काफ़ी मोटी है, मैं 20-25-30 सफ़ों की होगी, तो उसको टिक करते हैं और फिर 2-3 बातें निकल आती हैं तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस होगी। तो मैं ये कहता हूँ हर चेक बॉक्स के ऊपर मार्क्स दिए जाएं, और फिर उन मार्क्स के साथ वेटेज के साथ देख के आप असेस करें कि क्या ये इतनी बड़ी नॉन कंप्लायंस है कि इसको कुछ कहा जाए। हम ओवरऑल जो है ना वो 1 या 2 पॉइंट्स निकाल ही लेते हैं, किसी को भी कहें कि निकालें तो परफेक्ट से परफेक्ट फाइल में भी चीज़ें निकल आ सकती हैं। तो लेकिन उसकी वेटेज कितनी है वो अगर हमने पहले से प्री डिटर्मिन्ड ओपन माइंड के साथ मार्किंग ना दी हो, हम नहीं कर सकते। तो ये रेगुलेटर को इस तरफ लेके आना कि जी 1 पॉइंट निकाल लें कि जी फलां लॉ की नॉन कंप्लायंस हुई भी है कि जी आपने सेल टैक्स विद होल्ड नहीं किया हुआ, ये उसको सेपरेट लाइन आइटम के तौर पर डिस्कस किया था। क्या ये इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? अगर सेपरेटली डिस्क्लोज किया हुआ तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। आप ये कह सकते हैं एक डिस्क्लोजर नहीं दिया, क्या वो इतना मटेरियल डिस्क्लोजर था कि वो ना देने से कोई फर्क पड़ता है? तो हमें इन चीज़ों के ऊपर भी आना पड़ेगा कि हमें जब रेगुलेटर हमारे पास चेक करने आए, चाहे वो आई कैप का हो, चाहे AOB का हो, चाहे SCCP का हो, हमें उनके साथ भी बैठ के कोई ये स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहिए कि जब आपने इन स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करना है, इनको देखना है, तो देखें कि हम एक रीजनेबलनेस के साथ उसको असेस कर सकें। तो मुझे लगता है कि जहाँ हमारे मेंबर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिविटी के साथ और ओपन माइंडेडनेस के साथ हमारे रेगुलेटर की भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू राज साहब। अगर माइक हम यहाँ ले लें और ऑडियंस से कोई क्वेश्चन अगर यहाँ ऑडियंस करना चाहे हमारे पास लाहौर से, और इन द मीन टाइम जुनेद देखें जूम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन
इधर आगे माइक दीजिए, आगे दीजिए। शायद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो राजेश साहब ने बात की ना जी, इसमें जो टू मेक द लाइफ इजी एंड सिंपल, देयर शुड बी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स so that every firm can comply whether on cost or without cost, by ICAP or someone other. If there are standard templates to be followed, the life of the auditor would be easy and simple. So I recommend that to, I mean, for the every firm or for different types of entities, say for example listed or significant entity or other PIC, there may be 2-3 types with certain addition or with certain less documentation, so that every firm can comply. It would, I mean, I think it would ease the life of the auditor. Thank you. Thank you, Arsalan. Important. अरसलान, अगर आप स्टेज पे आ जाएं सामने, लोग आपको देख सकेंगे ना, ये आपको यहाँ से लोग नजर नहीं आ रहे, सामने आ जाए। So मैं ये कह रहा चाह रहा था, I think I just wanted to share एक तो बड़ा important, we have taken this feedback and this is already on the plan कि हम जो है we are going to issue certain implementation guidance, sharing best practices on what are the sample quality risk, what are the sample control procedures which can be expected across 7 and 8 components of the ISQM. So that will help the firms to formulate their policies, to see whether what risks are more relevant to them and what not. So that, I think, is on the cards. But I think more importantly, we need to see this beyond the documentation. Yeah. It is like an internal control system. I think Almas Sahab very rightly said, it is like an internal control or SOX approach for a company. It is a SOX for an audit firm, where you have to implement a control system and document what are the risks and what are the control implemented. But substance over form is more important. Again, it's not about small or big firm. It's about एक documentation करना एक चीज की और एक believe करना कि इसकी जो process है वो कितना, how you are committed to the process. For example, अगर आप basically ये time management system, so time management system एक single partner firm भी maintain कर सकती है in shape of a diary कि उसने कितना time किस client पे spend किया है, ठीक है ना? That's a requirement of. Similarly, अगर आप उस इधर आ जाएं in terms of the EQR process. EQR process can be a form filling exercise. EQR process can be a very robust and in substance challenging the engagement team कि आपने कौन से significant areas को ignore किया या नहीं किया. So I think implementing the controls in substance is more important regardless of the size of the firms, because these are the documentation is important because obviously whatever you do has to emerge from certain policies and procedures. But if you training, like if you want to perform quality audits, you actually have to provide quality trainings to your staff. And most importantly, accountability. Now, how the partners in the firms are rewarded or compensated. Is that compensation linked to their quality performance or not? There are firms which actually rate partners' performance on the basis of the revenue that they produce. Okay, there's so much of an emphasis on the financial performance. But if you do not make them accountable on the quality, and the reward and compensation of the partners is linked to their quality performance, so I think that is not going to bring any seriousness to the quality initiatives in the firm. So ये वो initiatives हैं जो prove करते हैं कि आप कितना serious हैं about the quality or about the public interest that you're protecting through your audit work. So अगर आप ये कहते हैं कि basically ये सब एक documentation है and this is to demonstrate
to the regulator, fine. But I think there are certain key steps which you can take to make sure that people take quality very seriously in the firm. So अगर आप देखें over the years, I think एक बहुत ज़्यादा concept जिसको foreign regulators ने, FRC ने, PCOB ने implement करा है across the major firms also, that the hiring and firing of partners and their compensation should be directly linked to their quality performance. And this is something which was not done before. So as a result, because partners started to take quality and the issues very seriously, because they know at the end of the day, whatever they produce in terms of the revenues and profitability to the firm, if they fall behind a quality standard, that is going to destroy all financial performance in one go. So this is because of the regulatory push that has happened over the world. So basically, and this has brought a lot of improvements within the systems of the quality in the firm. So with that, I think we respect your views, and I think we, inshallah, will be issuing, I would not say a lot of guidance, but I think to the extent we have resources within ICAP, I think we'll try to produce guidance to help you implement the standard, inshallah. Thank you, Aslan. Thank you. Thank you for coming all the way from Karachi and attending this event. अच्छा, we have a question on Zoom. अलमा साहब, तो आप काफी देर से इनएक्टिव बैठे हैं, तो मैंने कहा एक आपसे क्वेश्चन हम ले लेते. आप निकलें, अगर आप 10 मिनट रुक जाएं तो वाइंड अप कर लेते हैं, क्या कहते हैं? चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू. हमारे पास जूम पे क्वेश्चन है शायद साहब का, वो कहते हैं देखिए ISQC1 was becoming more of a tick box exercise. अब क्या ISQM1 जो है, क्या ये क्वालिटी और कंप्लायंस दोनों इंश्योर करेगा आपके ख्याल में? I believe yes, provided it's taken up in a right manner. जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं. मुझे पता है कि SFP में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कहें तो अभी गिनवा देता हूँ. You know, since we are in the field, एक बड़ी आपको टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ. जब ये मैं स्टडी कर रहा था क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 1, तो उसमें एक सबसे बड़ा डीमेरिट विद स्मॉल प्रैक्टिसेस वाज कि वहाँ पे देयर कैन बी लैक ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, पीपल वुड नॉट डिस्कस. तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है. When my staff looked at me, they look at like this, and they look to me as an alma mater. Everything, you know, it flows from me. तो मैंने कहा ये तो फिर मेरी प्रोफेशनल डेथ हो गई. I started taking them in confidence. अब देखो, अब ये मैं उसको रिस्क को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ. मैंने उनको इकट्ठा किया, मैंने कहा यार देखो, अब ये जो तुम्हारे आजकल की ऑडिटिंग का पेपर दे के आए थे अभी वो CA फाइनल का, तो मैंने कहा यार वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर इसमें मैं बैठूं तो शायद मैं फेल हो जाऊं. हमारे वक्त में आज से 39 साल पहले तो बड़ा सिंपल होता था. उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. मैं कहा देखो यार, मैं रोज आप लोगों से सीखता हूँ. उनमें कुछ और कॉन्फिडेंस आया. फिर एक दो लड़के कोई उसका बेनिफिट लेकर के मेरे पास आए, सर देखेंगे पिछले साल वो ये तो गलत किया हुआ है यार, शाबाश, पकड़ा बाहर ले आया स्टाफ में, a pat on the back. ये क्या कर रहा हूं मैं? जो इनहेरेंट रिस्क है एक स्मॉल प्रैक्टिस का, कि वो एक ही बंदे को देखते हैं या दो को देखते हैं, और सब कुछ वहीं से फ्लो कर रहा है. ना कोई मैनुअल है, ना कोई बहुत बड़े अलर्ट्स आ रहे हैं, यू नो. तो मैंने इसको इस तरह से हैज किया, एंड अगर मुझे लिखना पड़ा तो मैं इसको इसी तरह लिखूंगा. दूसरा रिस्क क्या है? मुझे बड़ी टेम्पटेशन, प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट कि जी ये आपको अकाउंट्स दिए हैं, आप हमें विद इन 30 days रिपोर्ट दे दें. प्रेशर है फ्रॉम द क्लाइंट.
इसको भी मुझे हेज करना है, आई कैप ने नहीं करना। और ये एक कल्चर है जो फर्म के अंदर बन जाता है। तीसरा, मैंने आपको दो गिनवा दी, आप कह रहे थे ना रिस्क असेसमेंट स्मॉल फर्म की, मैंने आपको दो रिस्क, और ये कोई लंबे चौड़े रिस्क नहीं होंगे। ऑडिट क्वालिटी के रिस्क लंबे चौड़े हो ही नहीं सकते, दो नहीं तो तीन होंगे, तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में भी। बड़ी टेम्पटेशन है, ऑडिट फी कम है लेकिन टैक्स की फी बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ यार मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कौन सा रिस्क आएगा? इंडिपेंडेंस वहां इंपेयर हो सकती है ड्यू टू नॉन ऑडिट सर्विसेज। अब ऑडिट फी 2 लाख है, टैक्स का 7 लाख रुपए की फी बन रही है, तो टेम्पटेशन तो आएगी ना कि भाई मैं भी घर से बिजनेस करने निकला हूं। तो ये वो चीजें हैं जिनको मैं ये नहीं कहता मैं उसको छोड़ दूंगा, अब मैं उसको हेज करूंगा, उसको देखूंगा कि हाउ कैन आई मीन गार्ड अगेंस्ट इट। तो हमें इससे डरना नहीं है, प्रैक्टिस में हैं और ये चीज़ें पहले भी आती रही हैं, अब भी आएंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, मैंने उस दिन कहा था कि 86% कंपनीज है ना पाकिस्तान की, सिर्फ 3,380 पब्लिक कंपनियां हैं जिनमें कोई 512 लिस्टेड हैं और 303 वो हैं, वो छोड़ करके बाकी तो सारी की सारी पहले स्टैंडर्ड में आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेक्शन जो था वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का था, और वो मनोअन वही रखा है उन्होंने। तो इसके ऊपर आप आगे बढ़ें, करें, देखें। ऑल्दो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बेतहाशा नई चीजें भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑब्वियसली बदला है, बहुत कुछ बदल गया है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो that's how I look at it, you know. थैंक यू अलमा साहब। वसीम साहब आपके पास कोई क्वेश्चन? Yes, I have one comment on Rashid Saab talked about, and question for Makbul Saab. राशिद साहब ने बात की रेगुलेटर्स की और आई कैप की, तो मैं राशिद साहब की बात को बड़ा ही ज़्यादा एम्फेसिस के साथ सेकंड करूँगा कि हमारे रेगुलेटर्स, जैसे आपने फरमाया कि वो तो बहुत सारे हैं, गिना दिए, काफ़ी सारे हैं आई कैप समेत, लेकिन आई कैप को रेगुलेटर के साथ साथ एक फैसिलिटेटर भी होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे अदारे जो हैं वो फैसिलिटेटर नहीं हो सकते, दे आर प्योर रेगुलेटर बॉडीज। बट आई कैप, members form body corporate of ICAP, ये शायद हमारे CA ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है प्रियम्बल में शायद। तो मैं जब से मुझे 28 इयर्स हो गए, फैसिलिटेशन का हमेशा से ही फुकतान रहा है। जब भी कोई ऐसी चीज़ें आई, नई चीज़ें आए, ICAP शुड इमीडिएटली टेक एक्शन to facilitate its members, provide necessary guidelines. ये राशिद साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की कि वो वेटेज के साथ ऐसी चीज़ें मेंबर्स को डिसेमिनेट करे जिससे उनकी वो गाइडेंस ले सकें और उसके मुताबिक वो अपने आप को वो उसको अडॉप्ट भी कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक अरसा हो गया चेकलिस्ट की कभी बात की होती थी, वो शायद अब आई है, कोई कुछ साल पहले कुछ आई थी, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू से ही अब तक वो इशू एड्रेस नहीं हुआ कि व्हेन एवर वी सीक एनी ओपिनियन फ्रॉम आई कैप, वो एक फ़ोन कॉल कभी कभार कर देते हैं, वैसे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो कभी कभार एक फ़ोन कॉल आ जाती है कि आपका ये क्वेश्चन था, आपने ये क्वेरी की थी, उसका जवाब ये है। सो व्हेन यू आस्क देम टू गिव अस इन राइटिंग, they would not, because वो समझते हैं कि वो सिर्फ रेगुलेटर ही हैं, वो फैसिलिटेटर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे हम्बल व्यू में, आई कैप शुड रेगुलेट बाय फैसिलिटेटिंग द मेंबर्स, क्योंकि कोई और अदारा ये सिचुएशन हमें फैसिलिटेट करने नहीं आएगा। दैट थिंग शुड बी अंडरस्टूड। देखिए आपका क्वेश्चन में आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, क्वेश्चन क्या है? Comment, मकबूल this साहब is a के लिए क्या comment क्वेश्चन? further views of राशिद साहब। मेरा मैं राशिद साहब सिंपली के ये है पास कि facilitation should be provided immediately when there is something comes new,
ठीक है, ड्यूली नोटेड। मगर मैंने क्वेश्चन मकबूल साहब से क्या लेना है? क्वेश्चन में आप आ रहा हूं, मकबूल question साहब, की आप तरफ। क्वेश्चन मौका ही ना मिले, क्योंकि असद मुझे क्वेश्चन नहीं फॉरवर्ड करना चाह रहे, तो मैं राज साहब से रिक्वेस्ट करके ये ले लूँगा। जी देखें, जो प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं ना, उनके आपने बड़ा राइट डी का 2 रोल होते हैं। एक रेगुलेटर का रोल होता है और एक एसोसिएशन का रोल भी होता है, मेंबर्स एसोसिएशन का रोल भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये बार कौंसिल जो हैं, ये रेगुलेटर भी हैं, अपने बंदों को टर्मिनेट भी करती हैं। अब पिछले दिनों लाहौर टैक्स बार को बार से निकाल दिया था, फिर वापस ले आए, लेकिन अपने इंटरेस्ट को भी वॉच करती हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जहां हम सिर्फ रेगुलेटर का रोल रख लेते हैं और दूसरे रोल को छोड़ देते हैं, वहाँ फिर प्रोफेशन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं तो फैक्ट्स बेस अभी बातें करनी शुरू इसलिए की हैं कि मैं जब इंस्टीट्यूट में आया तो मैंने प्रैक्टिसिंग कमेटी का जब चेयर बना, तो मैंने इंस्टीट्यूट कहा कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का साइज़ क्या है। तो इंस्टीट्यूट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमने SCCP को 1.5 महीना फॉलो करके तो हमने पूरा अपना साइज निकाला है। लेकिन ऑडिट फर्म का आपका साइज है 701 फर्म है आपकी, उसमें सिर्फ 120 फर्म जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं, और 63 फर्म्स हैं जो AOB के अंदर फॉल करती हैं, राइट। ये तो आपका प्रोफेशनल लैंडस्केप बता दिया मैंने। आपके कॉर्पोरेट का लैंडस्केप ये है कि 161,000 कंपनीज हैं टोटल पाकिस्तान में, उसमें 126,000 कंपनी जो है ना वो 1 मिलियन से कम है, जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। वो ऑडिट करवाते होंगे, वजह होती है करवा लेते होंगे, लेकिन उनको ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है टैक्स के लिए, यानी 126,000 कंपनी है। और उसके बाद 3 मिलियन तक आपके पास एक और ऑडिटर बैठा हुआ है, और वो ऑडिटर को शायद हमारे कुछ स्टेप से जान मिल जाएगी, जो हम कुछ स्टेप ऐसे कर रहे हैं, शायद उसमें हम थोड़ी स्ट्रेंथ डाल देंगे अपने ही स्टेप से। वो मसलन अगर आप वो 4.23 का रेफरेंस आ रहा था जहाँ डायरेक्टिव का, उसमें अगर जाके ना तो नीचे प्रोवाइजो दिया हुआ है कि ये जो ऑडिट फी रिकमेंडेड भी है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगी उस कंपनीज पे जिनका 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल है। ये मैंने डलवाया था। मैंने कहा कि यहाँ भी आपने कोई फीस रिकमेंड कर दी तो हमारे मेंबर के लिए कंपटीशन की जो लैंडस्केप है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक और ऑडिटर बैठा। ठीक है, हमें इसे भी वॉच करना। अब टोटल आपका बिजनेस साइज जो है ना कॉर्पोरेट का, अगर वो उसके मुताबिक 10 मिलियन से ऊपर जो कंपनियां हैं ना वो अकाउंट्स फाइल करती हैं, राइट। उनकी और पब्लिक सेक्टर कंपनी की तादाद मिलकर 15,000 बनती है टोटल पाकिस्तान के अंदर, राइट। अब जो अकाउंट फाइल नहीं होते वो पता नहीं उनके ऑडिट होते हैं नहीं होते, कॉन्सर्न लेटर चले जाते हैं। ये प्रोफेशन हमारा बहुत रिस्ट्रिक्शन में है, हमें कुछ इस पे काम करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि 120 कंपनियों की QCR करने की कॉस्ट इंस्टीट्यूट को क्या आ रही है, राइट। अगर मैं अभी बताऊं ना आपको तो शायद पर फर्म 2 लाख से भी ज्यादा आ रही होगी, 2-2.5 लाख आ रही होगी पर फर्म की कॉस्ट जो है QCR की ICAP को आ रही है। और ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने आके अपनी अलग चौधराहट खड़ी कर दी है, और वो अब इनएफिशिएंसी हमारे QCR की इतनी ज्यादा आ गई हुई है। बाहर QCR होता है मैक्सिमम एक फर्म का QCR जिसमें 2 पार्टनर तक होना 11 to 12 आवर में हो जाता है। फील्ड वर्क होता है 5 से 6 घंटे का, बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करके रिपोर्ट आने तक 10 से 12 घंटे लगते हैं 2 पार्टनर की फर्म हो, और आपके सब सामने QCR होता है। उसमें राज साहब ने बात की ना, एक्सपेक्टेशन गैप बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ये एक्सपेक्टेशन गैप को और बढ़ा देगा, राइट। हम एज ए इंस्टीट्यूट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्यों कि और AOB कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा, QCR कोई और एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो राज साहब ने वर्ड गाइड का है, उन्होंने गाइड ही सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोल प्रैक्टिशनर के लिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल मॉडल आना चाहिए, जिस तरह ऑडिट का मैनुअल आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल उसका नाम होना चाहिए। और सोल प्रैक्टिशनर के लिए आना चाहिए कि कम से कम हमारे पास 450-500 के करीब सोल प्रैक्टिशनर है।
वो क्यों नहीं कर रहे, दूसरी जॉब जा रहे, कुछ का एटीट्यूड वो नहीं है, इतनी क्वालिफिकेशन लेके कि वो कंप्रोमाइज करते फिरे। उन्होंने इसलिए अपना रास्ता बनाया कि अपनी प्रैक्टिस करनी है। मियाँ साहब की बात नहीं सुन सकते, उनका अपना एक स्टाइल है। तो हमें एक तो उनके लिए एक लेस कॉम्प्लेक्स जो फर्म हमने वर्ड यूज किया है उसका भी बनना चाहिए। बाकी मोर कॉम्प्लेक्स को आप छोड़ दें, वो खुद ही उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, ऑडिट फीस भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वो अपने आप को वॉच कर लेंगे। लेकिन आप दो चीजें जरूर करें कि क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल फॉर सोल प्रोपराइटर और क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल फॉर लेस कॉम्प्लेक्स फर्म जो आपके हैं वो बना दें, ताकि एक्सपेक्टेशन गैप ना, वरना हमारे QCR में अगर 120 फर्म आई हैं वो भी काफी निकल जाएंगे इससे। क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट बहुत अहम एस्पेक्ट होता है आपको क्वालिफाई करने में। जैसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। और मैं इंडिया को देख रहा हूँ, 67% लोग जो है ना प्रैक्टिस के अंदर 3,51,000 आ रहे इस वक्त उनका नंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बिल्कुल ठीक है। 97 में 12,700 पॉपुलेशन के अगेंस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था, आज 3,900 की पॉपुलेशन के अगेंस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। वो क्या है, 100% अकाउंट फाइलिंग है उस कंट्री के अंदर। पर पार्टनर लिमिटेशन है ऑडिट की, 25 ऑडिट कर सकता पर पार्टनर, उससे फर्म भी डेवलप होती है। और उसके अलावा कोई और ऑडिटर एग्जिस्ट नहीं करता वहां, जैसे हमारे यहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। 6 महीने का टाइम है, आपका टाइम भी 4 महीने है, और तो फाइल 60 डे में असेंबल करनी है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है, चलो जिस तरह एक 2-3 डायरेक्टर की प्राइवेट कंपनी की AGM होती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है ना, और क्या हो रहा होता है, ये डायरेक्टर मीटिंग हो गई, ये AGM हो गई, ये हो गया, वो सारे ये रेजोल्यूशन पास हो गई, सारा कुछ पेपर पे हो रहा होता है। बिल्कुल आपके यहाँ भी बहुत कुछ पेपर पे होता है, होगा और होगा, राइट। तो इन सारी चीजों को करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एज ए पॉलिसी मेकर भी लेनी पड़ेगी। और मैं कोई जस्टिफिकेशन फाइंड नहीं करता कि हम भी QCR करें, उन्हीं का ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी लगाम डाले, सीधा सीधा हम अपना QCR करें और वो अपना जो करना फुल करें। कुछ हमारे लोग खाइफ हैं इससे, वो समझते हैं कि इससे शायद बिगाड़ आएगा, बिगाड़ नहीं आएगा। आपका QCR बोर्ड डिले हुआ है, इन बच्चों को बुला के इंटरव्यू कर लें, ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। इसलिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं कि उनको ऊपर से डाले, कि उनकी फाइल जब AOB वाले बात करेंगे। तो इसलिए बात आपकी बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं कि हमें दूसरे अपने रोल को भी थोड़ा एक्टिवेट करना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारा मेंबर हमसे डिसअपॉइंटेड होगा, प्रोफेशन ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और इसमें ग्रोथ नहीं आएगी। बिल्कुल। अब देखो ना 800-900 बंदा, 9,000 में से 10% बंदा आपका प्रैक्टिस में हो, और मैं 67% कह रहा हूँ 3,51,000 में से, राइट। वो कानून में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उनकी आवाज भी सुनी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इंडिया सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, राइट। उनको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी हो रही हैं। तो हमें कुछ इस प्रोफेशन के लिए ना कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना होगा। तो ये आपको मेरा ख्याल है कि मैंने वो दूसरा रोल उजागर करने की जरूरत है। बिल्कुल कर दिया, बट हमें आपसे, यू बीइंग इन दिस टर्म, आपसे बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं कि आप इस चीज़ों को सिर्फ टेकअप ही नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट, इनको डिज़ाइन भी करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। थैंक यू सिंह देखो, साहब। मेरा एक सिर्फ question एक है, था। मैं आपको बता दूं, अगर हम इधर कहें ना का बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट मांगे थे, तो आप अगर बता दें किस किस ने कमेंट सेंड किए हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू है। कमेंट 5, 7, 10 गए होंगे वहाँ पे। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने क्या कमेंट भेजा मैं बता देता। मैं कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता, मैं कमेंट भी भेज दूँ एज ए आम, मैंने प्रैक्टिशनर के तौर पर कमेंट भेजा, क्योंकि इसने रुकना नहीं है, इसने इम्प्लीमेंट होना है। 15 दिसंबर को इसने इम्प्लीमेंट होना है, क्योंकि हमारा SMO है। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कर दो, उन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। मैंने नहीं कहा उन फर्मों में कर दो जो QCR है। मैंने कहा इवन लेट्स से टॉप फर्म है, उसके पास भी 2 तरह के ऑडिट हैं।
एक उसके बाद एसएमई का ऑडिट है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का ऑडिट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट वाला ऑडिट है उसके अंदर ये टोटल 15 दिसंबर से आप कर दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो एसएमई जो दूसरे ऑडिट है नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के, उसमें कम से कम 1 साल इसको डेफर करें ताकि लोग इसकी प्रिपरेशन करें, उस पर हमारी और एजुकेशन आ जाए, उसमें हमारे मैनुअल्स आ जाए जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो वी विल इन अ बेटर पोजीशन टू एक्चुअली इंप्लीमेंट, नॉट जस्ट शो पीस नहीं होगा। दैट्स व्हाट माय फीलिंग। मैंने ये कमेंट भेजा है, इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ माय अदर कुलीग काउंसिल में जो हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको फेज में ले जाएं। ये हमने प्रैक्टिसिंग जो हमारी कमेटी है मेंबर्स की, उसमें भी हमने डिबेट किया है, सबका यही व्यू था कि बिल्कुल इसको इस तरह चले जाना चाहिए। तो सर एसोसिएशन होने का मकसद तो सिर्फ वसीम साहब वो फिर हम ना खाने पे बस आ जाते हैं। मैंने एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ले मेरा, लूं, एक छोटा सा अमीन से एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ले लूं, मैं बिल्कुल रन आउट कर गया, फिर आपको लूंगा मैं आपको। थोड़ा सा ना हम डेविएट कर गए अपने सब्जेक्ट से ना। अमीन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। मुझे अंदाजा है, मुझे बार बार इशारा हो रहा है टाइम का, मगर आपको मैंने नहीं लिया था, मकबूल साहब को ऑटो पे आ गए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद यहाँ पे हमारी देखनी पड़ेगी हर तरह की प्रैक्टिस के लिए, वो है आपकी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। आप कैसे, मतलब आप भी एक फर्म रन कर रहे हैं, माशाल्लाह पार्टनर है, कैसे देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा? मकबूल साहब ने अभी एक पॉइंट भी रेस किया यहाँ पे कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें और इस पे फिर हम अपने पैनल क्लोज कर लें। थैंक यू। जब थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देखिए, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की जब बात करते हैं तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अपने इस सवाल के जवाब से पहले मैं जो सर ने बात कही कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट्स आती चली जा रही हैं, इन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आर्टिकल स्टूडेंट से शिफ्ट जो उनका है वो क्वालिफाइड स्टाफ की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इस जवाब के साथ मकबूल साहब की बात को ऐड करूं, जो कि एक इंटरेस्टिंग इन्होंने एक स्टैट बताया है कि गालबन 12,500 के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो 3900 पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आ गए हैं, और वहाँ पे 67% प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं। अगर हम इसी स्टैट को पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो शायद 22 करोड़ के अंदर हम 11,000 हैं, तो 0.005% बनते हैं। और उसमें भी अगर हम प्रैक्टिस में ले लें तो दिस इज अ वेरी मीगर परसेंटेज विच कम्स। और उसके ऊपर हमारा दूसरा बड़ा मसला ये कि ओवर रेगुलेशन की वजह से, या शायद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से, जो एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका टेंडेंसी टू ज्वाइन द प्रोफेशन वो भी कम है। और हमारे बहुत सारे मॉडल्स, अगेन जैसे सर ने कहा 25 ऑडिट्स पर पार्टनर या 6 मंथ्स फॉर एन ऑडिट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट देती हैं, वो नहीं है। तो हमारे पास ले दे के एक ही चीज़ रह जाती है कि हम कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अरेंज करें जिसमें कि फर्म्स के SMPs हों, बिग फर्म्स हों, कोई भी हो, उनका जो ऑडिट स्टाफ आता है आप उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई एक फॉर्मलाइज्ड प्लान लॉन्च करें। जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई, अभी आप लोगों ने NRC ने इस 4 दिन की वर्कशॉप अरेंज की जो कि लाहौर में हुई, और साथ अब पैरेलल इस्लामाबाद में भी हो रही है। दिस कैन बी वन वे। इसी के साथ साथ जिस तरीके से हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मैनुअल्स लाए जाएं जिसमें कि फर्म्स को बताया जाए कि आपकी क्वालिटी के लिए ये टेम्पलेट्स हैं, आप इनको फिल करना शुरू करें और फिर उसी तरह सोचना भी शुरू करें, ताकि जो क्वालिटी, जो एटीट्यूड की हम बात करते हैं, वो एटीट्यूड भी आप में उसी तरह से रिफ्लेक्ट होने लग जाए। बिल्कुल इसी तरीके से फर्म्स को अपना एक बेसिक कॉम्पिटेंसीज के लिए अपने स्टाफ को वन रीजन और दी अदर ट्रेन करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले सर ने एक बात कही थी कि जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और जो रिक्वायरमेंट्स रुकने वाली नहीं है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है पार्टनरशिप्स। increasing the size of partnerships so that with that size there are more people, they are trained and they are trained to that extent कि जो क्वालिटी हम उसको जिस तरह मर्जी फ्रेज कर लें, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो तमाम तरीकाकार और तमाम किए जाने वाले काम वो ऑटो पे उसी ही तरह हो जाएं जैसे कि हम चाहते हैं। इसको जैसे भी प्लान किया जाए, लेकिन वे आउट अल्टीमेटली यही रहेगा। आपका मतलब है इसमें ICAP का एक रोल होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास ना एक राव सुहेल साहब का भी क्वेश्चन आया हुआ है जूम पे। जी राय साहब। जैसे सोल्यूशन एक ये भी है कि अब पार्टनरशिप्स बने, तो मेरा ख्याल में एक उसमें इंटरमीडिएट स्टेट भी हो सकती है कि हम अपने 4-5 फर्म्स जो हैं मिलके एक अपने ट्रेनिंग सेशंस खुद बनाएं। वो भी एक अच्छा आइडिया होगा, 4, 5, 6, 10 फर्म्स मिलके
एक दूसरे को सपोर्ट करें, कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, इसको भी डॉक्यूमेंट करें. I It think will be a that's good more, idea. that's more viable. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट कि वो फर्म्स आपस में भी कुछ अपने एंड पे करें, आईकैप अपने एंड पे कुछ करे, फर्म्स भी अपने एंड के ऊपर कुछ करें. इंडिया बस- में बस- जो लोकल नेटवर्क्स हैं, लोकल नेटवर्क्स जो हैं, those are in hundreds. हमारे स्टैटिस्टिक्स problem- शेयर किया ना इन्होंने, राशिद 700 पार्टनर लोग फर्म्स हैं सर, प्रैक्टिस में 700 प्रैक्टिस में लोग, हम इस वक्त हम 700 लोग प्रैक्टिस तकरीबन आए. मैं बताना चाह रहा था कि जब मैंने क्वालिफाई किया था 19 नवंबर 86 के टेंट में, जब मैं मेंबर बना था, उस वक्त हम 1500 की मेंबरशिप थी, हम 750 लोग प्रैक्टिस में थे एट दैट टाइम. 50%. उस वक्त हम 750 प्रैक्टिस में थे. अब आप देख लें हमारी प्रैक्टिस ग्रो कितनी कर रही है परसेंटेज. हाँ हाँ, तो इसकी बड़ी वजह जो है वो शायद आइडियलिज्म ऑफ द रेगुलेटर. सर अब नेगेटिव है, इंडिया के साथ भी कंपेयर करें तो वो भी अभी भी 50-50 पे रफली खड़े हुए हैं. जो लास्ट पे हमने एक साफा का इवेंट किया, राव सुहेल को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, मुल्तान से उनका आया हुआ है. वो बात कर रही हैं यूडिन के साथ और लिंक कर रहे हैं वही जो मकबूल साहब ने बात भी की, स्मॉल प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, और इस पे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, नोट भी किए हैं. तो राव सुहेल साहब को मैं कहना चाहूंगा, यूडीआईएन पे मकबूल साहब भी बैठे, हम लगे हुए हैं उसके ऊपर, और हम इंशाल्लाह आपके साथ होपफुली एक सेशन करेंगे यूडीआईएन के ऊपर. तो यूडीआईएन पे अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा मुहतात रहें और फिलहाल रुके रहें, और घबराना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ घबराना नहीं है, और इसका हम कुछ ना कुछ बातचीत आप साथ करेंगे. मेंबर मिसिंग था उस जो टास्क फोर्स बनी है, उसमें एक मेंबर मिसिंग था. ही वाज विजिटिंग यूएस से, आ गए हैं वापस, और हमारी शायद 14 को वापस उस पर मीटिंग है, क्योंकि यूरेन बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ. उसकी एक वजह तो देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, इंडिया ने उसको बड़ा ब्यूटीफुल एड्रेस किया हुआ है. वो अब हमें देखने का मौका मिला है अभी जब टास्क फोर्स बनी है, जो शायद जब यूडियन अप्रूव किया गया, इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, तो शायद उसको नहीं देखा गया, उसको नहीं देखा गया, क्योंकि ये वह डॉक्यूमेंट है जो किसी से कंसल्ट नहीं हुआ होगा. जैसे राज साहब शुरू से प्रैक्टिस मेंबर कमेटी में हैं, मैं भी शुरू से ही, लेकिन किसी स्टेज पे भी जब जिसकी अप्रूवल चाह रही थी, प्रैक्टिसिंग मेंबर कमेटी को भी नहीं कंसल्ट किया गया. तो वो उस वजह से जब कंसल्ट नहीं करते, कंसल्टेशन का फायदा होता है, रिफाइनमेंट आती है, सिर्फ ये फायदा होता है. जो आपने करना वो करना है, लेकिन अच्छा हो जाता है वो. तो उस पर हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह. ये ख़त्म तो नहीं होगा, मैं ये बता दूं, लेकिन इसको ऐसा किया जाएगा कि लोगों के लिए हार्डशिप ना पैदा करे. सही है. राइट, बेसिक बात ये है, क्योंकि पीआई से पे लग गया है, एससीसीपी को पता है कि यूडिन आ रहा है, बाकियों को नहीं लग रहा. तो इसको सिर्फ ये इस पे एफर्ट हो रही है कि ये हार्डशिप क्रिएट ना करे, और क्वालिटी का जो फंक्शन इंस्टीट्यूट करना चाहता है वो भी किसी तरह अचीव हो जाए. वो क्या है कि दो अकाउंट्स भी सामने आए ना लोगों के इन्वेस्टिगेशन में. तो जब हुआ तो उन्होंने कहा ये तो मैंने इश्यू नहीं किया, ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो लेटर एड यूज हुआ है. कई केसेस के अंदर ये चीज़ें आई, तो उससे हम सब बदनाम भी हो रहे थे. तो उसका ये हो जाएगा कि भाई जो अकाउंट इशू हो गए हुए हैं, हमारे मेंबर ने दे दी है डेट डाल के, वो अब उसमें है कि डेट क्या डलनी, कब डलनी, ताकि उसमें हार्डशिप ना आए. लेकिन उसका एक फ़ायदा तो अल्टीमेटली आ जाएगा, उससे तो हम कोई ना नहीं कर रहे कौंसल को भी, लेकिन हार्डशिप पे हम वो फोकस हैं. तो इंशाल्लाह उसका ना कोई 2-3 वीक में सलूशन आ जाएगा. तो सर ये सब कंटिनेंट के अलावा भी कहीं इंप्लीमेंट है वर्ल्ड में? दे फिर अपना वसीम साहब फिर डिबेट करके ना, अब यूटीन पे हम सेशन करेंगे. हम मैं सिर्फ एक कमेंट इसलिए लिया, नहीं सर एक मिनट, और इस पे हमने सेशन आप साथ करेंगे, फिक्र ना मैं करें. एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर सकता हूँ ना, वो मैंने आपसे किया है, कुछ वर्क हो रहा है. मकबूल साहब इस पे सेशन करेंगे ना, topic एक सेशन पे करेंगे हम, यूटीन पे सेशन करेंगे आप लोगों के साथ, फिक्र ना करें. करंट डे टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन है. आप क्विक क्वेश्चन कर. क्विक क्वेश्चन है सर मकबूल साहब से, कि जब आपने बात की अपनी प्रेजेंटेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड द क्वालिटी रिव्यूअर की, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है वो रेगुलेटर की आइज में क्या होगा? दैट वाज अलमात साहब ने कहा पहले भी कवर था, लेकिन बहुत अच्छा खासा कवर नहीं था. जैसे मैं बताऊं कि वो जरूरी था कि इक्वा रिव्यू हो. नहीं,
बहुत ज्यादा एनहेंस्ड किया है, हाँ, एक्सटेंडेड इसमें किया है, requirement इट बहुत वाज बढ़ देयर गई है। ऑलरेडी। बहुत बढ़ गई है। लेट्स से आप के पास एक लिस्टेड कंपनी है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से आप 2 पार्टनर भी हैं, दूसरा पार्टनर टैक्स करता है, वो जो मैंने बताया उसमें वो तो हो ही नहीं सकता इक्वालिटी, उसका नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, पिछली इन्वॉल्वमेंट इन असाइनमेंट्स वगैरह है ही नहीं है। वो इवन आपका पार्टनर है, इंटरनली हो नहीं सकता, आप बाहर से लाना पड़ेगा। अब पहले वाली पोजीशन में बाहर से आते थे लोग, जब आ जाते थे तो वो फाइल रिव्यू की फारग हो गए। अब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्वॉल्वमेंट है उसकी, सारे स्टेप्स पे स्टेजेस पे इन्वॉल्वमेंट है, उससे कॉस्ट फैक्टर बहुत बढ़ेगा, राइट। और उसकी भी जिम्मेदारी बनेगा। पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते थे, कई लोग करते रहे हैं, कंसल्टेशन की डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन करना, को सारे स्टेप कवर हो जाए, मुश्किल हो जाएगा आपको। यू हैव टू हैव सम एक्शन ऑन दैट। जैसे राज साहब ने कहा, मैं कहने लगा था, हो सकता है 10-10, 15-15 फर्मों के क्लस्टर बनने चाहिए, छोटे नहीं। उसमें ट्रेनिंग भी ड्रेस हो जाएगी, उसमें कंसल्टेशन भी आ जाएगी, उसमें इका रिव्यू भी आ जाएगा, ये सारी चीजें उसके रिसोर्स बन जाएंगे। तो हो सकता है 10 से 12 फर्मों को कॉस्ट शेयरिंग बेस पे सिर्फ इस फंक्शन के लिए शायद ग्रुपिंग करनी पड़े। Who will bell the cat? हैं? Who will bell the cat? Who will bell the cat? जैसे राशिद साहब ने भी कहा, आइडिया दिया है, राशिद साहब ने भी I- कहा I- अलायंस होना चाहिए मुख्तलिफ इशफाक, फॉर्म्स का। I tell you मेरे what, पास में होता है पाकिस्तान I की। tell you what, हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ इतना Individual- इत्तेफाक नहीं है individual ना। है। मैं आपको individual। बताता हूँ। तो हो मैं सकता है कि मेरे मेरा पास में हो तो 100 पार्टनर की 200 पार्टनर की फर्म बना लूं, लेकिन पता मसला क्या है, हम लड़ भी जल्दी पड़ते हैं। मसला हाँ, ये यही है। तो है, इत्तेफाक नहीं है ना, बहुत मसला है। इत्तेफाक नहीं लोगों है, मैं में- यही तो कह रहा हूँ। जी, लोगों में लेकिन सर मेरा अर्ज है। क्वेश्चन आपने वो एड्रेस नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी रिव्यूअर जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर की आइज में क्या होगी? व्हाट आप क्या फोर्स कर रहे हैं कि हाउ ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग आई कैप? डिलीजेंस आएगी तो जिस तरह एक एंगेजमेंट पार्टनर पे प्रॉब्लम आता है, उस पर आ सकता है, उससे बड़ा रिस्पॉन्सिबली काम करना होगा। इसके लिए ही इज द लास्ट चेक ऑफ द क्वालिटी। इसके लिए बहुत जरूरी हो गया ना, फैसिलिटेशन कीजिए, प्रोवाइड की जाए। जी नोटेड। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब, अलमास साहब, नसीम साहब, अमीन साहब, आपने प्रेजेंटेशन, मकबूल साहब आपने प्रेजेंटेशन दी, थैंक यू वेरी मच। तालियां एक बार पैनल के लिए बजा दें। ओवर टू अदनान। Thank you very much, our worthy panelists. Now, may I request, as a token of appreciation, we would have some mementos for the presenters and the members of the panel. May I request Rashid Mirza, sir, please. So the first, now may I request Mr. Muhammad Makbul, sir, please come to the stage and receive your mementos. Now may I request Mr. Muhammad Almas to please receive your mementos. Please give a huge round of applause कि आज हमारी जो insightful हमें जो information मिली है इसके ऊपर, they have contributed a lot. Thank you very much, sir. Now may I request Mr. Amin Ali to receive his memento. अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं कैसे हो? ठीक हो? इस साल बाद ही नजर आते हो हैं। कोई नहीं। Now may I request Sir Naseem Akbar to please receive your memento. एक मिनट खा लो, मैंने एक जरा खत्म कर लें एक चीज। सेमिनार लगा है मेरा। Now I request Mr. Makbul, Mr. Muhammad Makbul and Mr. Asaf Rose, please come on stage and give mementos to our worthy Rashid Mir Sahab. Thank you very much, sir. Thank you very much for being on the stage. Now, and then I would like to request
Mr. Ahmed Salman, Chairman, CPD Committee, NRC, please come on stage and give his closing remarks and the word of thanks. Thank you very much. Thank you very much, Ji. It was a great session, knowledge enhancing session, engaging panelist discussion. I want to thank all of the participants to attend this session and the chairman, Auditing Standard and Ethics Committee to arrange this session in collaboration with the Northern Regional Committee. I, on behalf of the practitioners, want to assure that we have complied with ISQC 1. We are going to comply with ISQC QM 1 or 2. But we want the regulator to come in the middle place, meet us in the middle ground. We will take some leaps, regulator come down towards us, and we meet in some middle ground with us. And we look forward to our council members to help us in this regard and try to reduce the regulation on this profession. I, on behalf of the practitioners, I know the new practitioners normally are not engaged or not convinced towards start the practice of audit. They are willing to do the tax practices and consulting, but they are shy away from the audit practice. This is going to damage our profession, and this is going to damage the professional conduct of our members in the future. We need to look forward towards it. I want to thank all the worthy panelists, Naseem Saab, Makbul Saab, Almas Saab, my teacher, Rashid Rahman Mir Saab, and our moderator, and Amin Saab and Makbul Saab for their presentations. Now, I think I hand over the podium back to our MOC of the day. Thank you very much. Thank you very much, Chairman NRC. Thank you very much all for being here and being a part of this important presentations and the session of the seminar. Now, I would not take many more time between you and that the dinner. So I formally can. So may I request you all to please come on the stage so we have a group photograph, please.